साईं महिरबानी लख कुर्बा अवां सभिनी जा। त असां हिन शेर सां शुरू कंदासीं। अवां सभिनी जे नाम जीअं सिंध, जीअं लतीफ़ जी ॿोली, जीअं रहबर सिंध साईं GM सैयद। केचां आयो काफ़िलो अतरो आंदाऊं, केचां आयो काफ़िलो अतरो आंदाऊं, खथूरी ख़ुशबू असीं वण टिण वासियाऊं, खीमा खोड़ियाऊं वरियो बख़्त बंभोर जो। अवां सभई हिते आया, अवां जी महिरबानी। अॼु जंहिं रहबर जी असां जनम ॾिहाड़े जे हवाले सां गॾु थिया आहियूं, उन खां पहिरीं जो असां अॻिते वधूं, सभ खां पहिरीं सिंध जो क़ौमी तरानो अवां जे साम्हूं पेश कजे थो। अचो त सिंध जो क़ौमी तरानो ॿुधूं। लाइट बंदि।
साईं मुंहिंजो तारुफ़ नंढड़ो आहे सिंध जी मिटीअ सां लाॻापियल मुंहिंजो नालो रज़ाक मसण आहे ऐं हूअं त मिटीअ जी चपटी आहियां जीअं सिंध त सबकी आहियां सो माफ़ कजो मुंहिंजो तारुफ़ तव्हां वाकई नालो रहिजी वियो मुंहिंजो नालो रज़ाक मसण आहे तरानो ॿुधोसीं पाण तराने जे अंदरि कुझु बोल हुया त मिटी माथे लाया मां जीव जीव जी जल सो जी जल खे हर को जीव चवंदो आहे उन जीअ खे जीअ में जायूं ॾियण जे लाइ असां सभिनी जो फर्ज़ु आहे त किथे बि हुजूं जिथे बि हुजूं त जी जल खे ज़रूरु जीव चजे हिकु अॻिते जेका आहे कारवाई कंदे पंहिंजी जेका असांजी हिकिड़ी आजाणी जी जेका तकरीर आहे असांजी नंढड़ी भेण आहे असांजी आहे त हूअं चवण में मुंहिंजे लाइ नंढड़ी आहे पर जॾहिं बि हुनजो नालो ईंदो आहे त यकीनन सिंध जो हमेशह ऐवाननि में आवाज़ भरपूर अंदाज़ में सघारे अंदाज़ में सदाई उथारींदी रहंदी आहे पोयनि ॾींहंनि में संदसि तबियत थोरी नासाज़ी मां पुछियो त अदी छा थियो आहे चईं अला मुंहिंजे गले में मसइलो थी पियो आहे मां चयो अलाह ख़ैर कंदो पोइ की बसि दुआ कयो ठीकु थी वञा जेकॾहिं मां जो आवाज़ु सही न हूंदो त मां सिंध जो आवाज़ु कीअं जेका सुथारे सघंदुसि जेकॾहिं मुंहिंजो आवाज़ु सही न हूंदो त नंढड़ा लफ़्ज़ हुआ मूंखे ज़हन ते चिटिजी आया सो बहरहाल अदी दुआ कलोड़ो असां वटि मौजूदु आहे जेका डिप्टी ऑर्गेनाइज़र आहे कैनेडा चैप्टर वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे प्लेटफॉर्म सां सो अदी दुआ खे गुज़ारिश आहे त अचे ऐं आजाणी जी जेका तकरीर आहे उहा पेश करे अदी दुआ कलोड़ो On behalf of World Sindhi Congress, I welcome you all to join us to celebrate the 119th birth anniversary of Saint GMSyed. World Sindhi Congress commemorates this day here in Canada, Houston, USA, and Sheffield, UK, along with thousands of other Sindhis all around the world. GMSyed was a man who inspired millions with his intellect, dedication, and love for Sindh. No matter how much one disagrees with Saint GMSyed's politics, no one ever doubts his unconditional love for the nation of Sindh. GMSyed will always enjoy a rightful place in history for being the first patriarch who articulated Sindhiyat and challenged the imagination of Sindhis by reminding them that they were a sovereign nation and Sindhi first. I welcome you all again and thank you for coming in today. Thank you अदी दुआ तव्हां ॾाढो जेका बहितरीन अंदाज़ में भेटा पेश कई महिमाननि खे वेलकम कयो तव्हांजी महिरबानी ईअं ई संदसि कलोड़े ख़ानदान सां जुड़ियल हिकिड़ी ॿी जेका आहे कदावर शख़्सियत ऐं नालो बि संदसि कदावर आहे त पाण बि कदावर आहे अदी फिज़ा कलोड़ो असां वटि मौजूदु आहे अदी वटि बि कुझु शयूं आहिनि जेके अवां सां वंड कंदी अदी फिज़ा Hello, I'm going to be reading two quotes from scholarly individuals about GMSyed. So, Punjabi intellectual Safdar Mir shared his scholarly opinion about GMSyed. Paradoxically, he has little credence as a political leader, though his ideological position is accepted by most Sindhis. His ideological position is based on the classical Sindhi literature, which is steeped in Sufi and religious universalism. It is in this firmly held intellectual and ideological viewpoint that he can hope to become the leader of the future, not only in Pakistan and India, but the world as a whole. The second quote is from Iqbal Tareem, founding president, GMSyed Students Federation. He will remain to be the Socrates of Sindh, who did not hesitate telling the truth, even if it meant castaway and castigation. GMSyed was not famous for his oratory or rhetoric, but he will always be envied by his friends and foes for this powerful message. Above all, his integrity and character were the most dominant tools which created an unbroken bond between him and his admirers. His vision of a true Sindhi was a tolerant Sindhi. He was a secular, progressive, and inclusive individual. GMSyed was a fearlessly open communicator who gravitated all kinds of people. Many of them gained direct access to him, and as a result, some of them negatively impacted his image by their bad actions. Said GMSyed will always have a special place in my life as a teacher who taught me to disagree with respect and to speak up my mind even when it is unfashionable.
If you claim to be Saint GMSyed's true follower, respect your teachers, cherish diversity, stand firm but be respectful when disagreeing with others, understand that you have an obligation to be an exemplary individual when representing his thoughts and visions. Thank you. Thank you, the Fiza Kalodo. हाणे पाण जंहिं शख़्सियत खे घुराइण वारा आहियूं उहो पंहिंजी ज़ात में इलाही बहितरीनु शख़्सियत आहे, तमामु सुठो जेको आहे सो कमु कंदड़ आहे ऐं सिंध जे हवाले सां सिंधी माण्हुनि सां सदाई जेको आहे हुनजो जेको साथ आहे उहो हमेशह रहियो आहे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस कैनेडा चैप्टर जा साईं जन पाण डिप्टी ऑर्गेनाइज़र आहिनि। आसिफ पहवर खे गुज़ारिश आहे त साईं जन अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। साईं आसिफ पहवर। महिरबानी रज़ाक मसर, तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी वॾी महिरबानी तव्हां अचण जी। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त अॼु असां साईं जेम्स जूं साईं 19 सालगिरह मल्हाइण जे सिलसिले में गॾु थिया आहियूं। साईं सिंधी क़ौम जो क़ौमी अॻुवान जंहिं इंसानी हक़नि, जमहूरियत, सेकुलरिज़म ऐं सिंध जी ख़ुदमुख़्तियारी लाइ जिदोजहद कई। सिंध जी वेझी सियासी, समाजी ऐं सक़ाफ़ती तारीख़ में साईं GMS जो हिकु वॾो किरदारु रहियो आहे। पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे विरहाङे खां पोइ जेके सियासी ऐं समाजी सूरत हाल ठही, उन जे पस मंज़र में साईं असांखे यकीन ॾियारियो त सिंधी हिकु क़ौम आहिनि ऐं हिकु ख़ुदमुख़्तियार मुल्क जी हैसियत में रही सघनि था। साईं इहो न सिर्फ़ु हिकु ज़बानी या तक़रीर सूरत में पेश कयो, पर उनखे साइंसी ऐं तारीख़ी हवालनि सां हिकु साबित बि कयो। साईं GMS जी शख़्सियत जा त काफ़ी पासा आहिनि, छाकाणि साईं न सिर्फ़ु हिकु सियासतदान हो, हिकु अदीब हो, मुहक़िक़ हो, तारीख़दान हो, पर मां हिकु उन साईं जा ॿ टे पासनि ते थोरो ॻाल्हाईंदुसि त साईं असांखे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खे असां लाइ रीडिफाइन कयो। पहिरियां शाह लतीफ़ भिटाई असां लाइ हिकु पीर फ़क़ीर हो, उन खां वधीक उनजी का न माण्हू उनखे सुञाणींदा हुआ, माण्हू उन वटि दुआऊं घुरण वेंदा हुआ, पर साईं उनखे हिकु क़ौमी शाइर जी हैसियत सां मुतारफ़ कयो, इंट्रोड्यूस कयो। उहो शाह लतीफ़ जंहिं तक़रीबन 250 साल पहिरियां कलोड़नि जे दौर में पंहिंजी शाइरी जे वसीले जेको पैगाम ॾिनो, जेको उन दौर बि असां सां वाबस्ता हो ऐं अॼु जी तारीख़ में बि उहो सिधो सां वाबस्ता आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में साईं हफ़ीज़ कुरैशी सीनियर चवंदो त भिटाई जे पैगाम साईं जूं निंडूं फिटायूं ऐं साईं जे पैगाम वरी असां जूं निंडूं फिटायूं। उन खां अलावा साईं हिकु तारीख़ी तौर ते असां सिंधियुनि जे सूरमनि या हीरोज़ खे बि रोशनास करायो। उनजो हिकिड़ो मिसाल इहो आहे त असां पहिरियां मोहम्मद बिन कासिम खे सिंध जो हीरो सम्झंदा हुआसीं, इहो ॿुधायो वेंदो, पढ़ायो वेंदो, पर साईं असांखे इहो ॿुधायो त मोहम्मद बिन कासिम हिकु हमलावर हो, हिकु फोरू हो, जंहिं असांजे ज़मीन ते कब्ज़ो करणु थे चाहियो, ऐं राजा ॾाहर असांजो असुलु हीरो आहे, जंहिं पंहिंजे मुल्क जो विढ़ी दफ़ा कंदे शहादत मानी। ऐं उन सां गॾु मखदूम बिलावल, शाह इनायत, दोदो सुमरो, दौलत दरिया ख़ान जी शख़्सियतुनि खे तारीख़ जे आईने में असांजे अॻियां पेश कयो त असांजा जेके असुल हीरोज़ जेके आहिनि उहे ए शख़्स आहिनि। साईं पंहिंजी ज़िंदगी जा तक़रीबन 29-30 साल जेलनि में गुज़ारिया, या त नज़रबंदी में हो, ऐं बग़ैर कंहिं मुक़दमे हलाइण जे साईं खे क़ैदो बंदि रखियो वियो। एसी ताईं जो साईं खे साईं अदालत में वेंदो, पर या सरकारी वकील ऐं जज अदालतूं छॾे हलिया वेंदा, ऐं उन में साईं जो जेको अदालती बयानु आहे, छाकाणि त साईं खे ॿुधण लाइ केरु तयारु न हो, त साईं जो जेको किताबु आहे सिंध ॻाल्हाए थी, उहो सॼो मुक़दमो हिकु तारीख़ी डॉक्यूमेंट आहे, जेको साईं पंहिंजो बयानु रिकॉर्ड करण ते चाहियो, जेको पोइ किताब जी सूरत में आयो, पर साईं खे कॾहिं बि अदालतुनि में न ॿुधो वियो। एसी ताईं जो साईं जी जेका वफ़ात 1995 में बि नज़रबंदी जे दौरान थी सिविल अस्पताल में। एमनेस्टी इंटरनेशनल साईं खे मुसलसल क़ैदोबंद जे करे ज़मीर जो क़ैदी करार ॾिनो। साईं न रुगो नौजवान सियासी कारकुननि खे मुतासिर कयो, पर उन दौर जे अदीबनि, शाइरनि, सियासी, समाजी ऐं मज़हबी अॻुवाननि खे मुतासिर कयो।
उन जो मिसाल हिकिड़ो इहो आहे त साईं वारे दौर जी तव्हां अदब खे वठी ॾिसो त उन में जेका जानदारी शाइरी जेका शेख अया जी शाइरी ॿुधूं था या उन जेके तव्हां अदब तव्हां ॾिसो कहाणियूं ॿुधो किसा ॿुधो जेके नावल ॿुधो उहे तमामु जानदार आहे उन जो सबबु इहो त उन दौर जी जेका साईं जी सियासत थी उहा तमामु सघारी हुई साईं तक़रीबन 60 खां वधीक किताब लिखिया तकरीरूं साईं जा मज़मून उन्हनि में ख़ासि हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि जेके आज़ादी छो ऐं छा लाइ सिंध जा सूरमा जीअं ॾिठो आहे मूं सिंध ॻाल्हाए थी नई सिंध लाइ जिदोजहद दयारे दिल दास्तान मोहब्बत जनम गुज़ारिम जिनसी सिंधियुनि जी तनज़ुल ऐं ग़ुलामी काराणी मुंहिंजे ख़्याल में या मूं जहिड़े हिकिड़े शागिर्द जी हैसियत में अहिड़ा किताब आहिनि जेके असां सभिनी खे लाज़िम पढ़णु खपनि न कि इन जे करे जो साईं जेम्स लिखिया आहिनि पर इन जे करे त इहे असांखे सिंध जी तारीख़ी समाजी सियासी सूरत हाल जी हिकु चिटी तस्वीर था पेश कनि ऐं मां त जॾहिं बि किताब कोशिशि करे हर 2-3 साल पियो पढ़ंदो आहियां त उन मां हर दफ़े मूं जहिड़े माण्हू खे त नओं सिखण जो हिकिड़ो मौक़ो मिलंदो आहे मां हिन शेर सां गॾु पंहिंजी ॻाल्हि मुख़्तसर कंदुसि त तुंहिंजा थोरा कीअं लहनि मूं वटि सिज न चंड तुंहिंजा थोरा कीअं लहनि मूं वटि सिज न चंड न ई मुंहिंजो मंड जो तोखे झोली विझां जी सिंध आसिफ साईं जी महिरबानी अवां साईं ते ॻाल्हायो यकीनन ऐं तमामु माक़ूल ॻाल्हायो ऐं तमामु थोरे जेका सुठी ॻाल्हि हुई उहा थोरे वक़्त में तव्हां ॻाल्हायो त दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश कंदासीं त इन तरह जा प्रोग्राम उमनि ईअं थींदा आहिनि त माण्हू सभु वधीक ॻाल्हाईंदा आहिनि पोइ बोर वधीक थींदा आहिनि सो कोशिशि इहा कयो त जामे ॻाल्हायो थोरो ॻाल्हायो त जीअं सभई दोस्त हुन मां महफ़ूज़ थियनि मलहूज़ थियनि सो ऐं साईं जे इन ते ज़िंदगी ते थोरी घणी का ॻाल्हि ॿोल थिए हिकु ॿी जेका महिमान शख़्सियत असां वटि मौजूदु आहे पाण जेके आहिनि पश्तून काउंसिल कैनेडा जा प्रेसिडेंट आहिनि सिराज खान हमारे यहाँ मौजूद हैं सिराज भाई हम आपको वेलकम भी करते हैं और आए और आप हमारे साथ साईं के हवाले से साईं जीएम सैयद के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें सिराज खान Welcome to all the guests and thank you so much World Sindhi Congress and the Kalora family. Say thoda zor se. Please. Okay. So I'll just talk briefly about the message of Sai GMSyed, which is love, unity and internationalism. So love, he believes that through spiritualism we can spread the message of love. And for unity, he says that unity can be achieved in diversity. Keeping in view the geography and the population of Sindh, he believed that so many different belief systems are there, and that belief system is creating a unity in that diversity. Regarding internationalism, he was of the view that the then two superpower blocs like the communist bloc and the capitalist bloc, he said that they should create circumstances where there is coexistence for other nations. And that coexistence, he says that it should be live and let others live. Regarding that region, he believes that in future there could be such an arrangement where Iran, Afghanistan, India, Middle East, they could be in a kind of loose confederation, and that could create towards stability in the region and towards global peace. About Sindhu Desh, he was a firm believer that the creation of Sindhu Desh, it would be better for the world peace as well as for the regional peace. And he was a strong advocate of Sindhu Desh, and you must read his book on Sindhu Desh or Case Study of Sindh. Then about the non-violence, he said that those nations who came here as invaders, like the Greeks, the Iranians, the Afghans, and other nations who
invaded Sindh. When they came to Sindh, they settled over there and they adopted that color of Sindh. They became Sindhi. They forgot their backgrounds. So that's the we could say the magic of that land, the magic of that matti, which adopt those people. He was of the opinion that if Sindhu Desh comes into being, all the resources that would be given to the people, and they would be the owners of those resources. And he believed that Raja Dahir is the national hero and would be the national hero of Sindh. He was wise like Socrates, and he can rightly be called the Socrates of Sindh or Socrates Sindh. His love for Sindh and above all love for humanity was so immense that the world recognized him as a person who believed in non-violence. And let me mention the name of other non-violent leaders of that time, like Khan Abdul Ghaffar Khan, who, like GMSyed, spent every third day of his life in jail because of his non-violence posture. And another personality who also happens to have his death anniversary in January is Mahatma Gandhi, who is a renowned non-violent personality. Like Jesus Christ, he believed in non-violence. And I would end my tribute to GMSyed. Thank you so much. GSM. Raj Khan साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. सिंध सदाई अमन जी धरती रही आहे. सिंध ऐं सिंधी माण्हू सदाई अमन ते असांजो बिलीव आहे, ईमान आहे. अमन ई असांजो सभु कुझु आहे ऐं अमन सां ई मुहबत सां प्यार सां अॻिते वधणु चाहींदा आहियूं. सो ईअं ई अॻिते वधंदे हिकिड़ी ॿी महबूब शख़्सियत ऐं तमामु सुलझणी शख़्सियत जेका ताज़ो ई संदसि जो जेको इलेक्शन जो जेको मामिलो हुयो उन मां ताज़ो प्रेसिडेंट थी चूंडिजी आयल असांजो महबूब दोस्त साना GTA जो प्रेसिडेंट इम्तियाज़ शेख साहब असां वटि मौजूदु आहे. शेख साहब खे गुज़ारिश आहे त शेख साहब अचो ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो ऐं अव्हांखे मुबारकूं बि ॿुधायो. महिरबानी मसूद मां तमामु थोरा थो आहियां साईं राजन कलोल साहिबु जंहिं असांखे इनवाइट कयो ऐं अॼु असां तव्हांजे साम्हूं आहियूं. ऐं जिन दोस्तनि खे मुबारक ॾियां सभिनि जी महिरबानी ऐं सभिनि दोस्तनि जी महिरबानी आहे जो अॼु मां प्रेसिडेंट जे हैसियत सां हिते तव्हांजे साम्हूं आहियां. सभ खां पहिरियों त साईं GMSyed असां ते वॾी महिरबानी कई जो असांखे पंहिंजी सिंध जे लाइ प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस करायो त असां ग़ुलामी जी हैसियत खां निकिरी असां पंहिंजी सिंध खे सही परखियूं त असां वटि छा छा आहे ऐं असां सां छा छा थियनि था जो असां अॻिते हली थी सघे थो अञा बि पोइते थी वञूं. असांजी साईं GMSyed जी वॾी महिरबानी आहे ऐं साईं GMSyed जी हिकिड़ी वॾी कदावर शख़्सियत हुई जंहिं पंहिंजी ग़ुलामी पाण क़बूल कई, उनखे हमेशह क़ैद में रखियो वियो पर हुन कॾहिं बि हार न मञी. असां ॿियनि जॻहियूं ग़ुलामी वञी क़बूल कयूं पोइ अॼु असां जेको हिते थोरो घणो बि असां सोचूं था पंहिंजी सिंध जे लाइ सोचणु त अञा वधीक घुरिजे. जेको बि असां थोरो घणो कमु कयूं था उन में साईं GMSyed जो किरदारु असांजे लाइ तमामु वॾी ॻाल्हि आहे. जंहिं पाण खे क़ैद में रखी ऐं सिंध जे लाइ कमु कयो. असां त हिते आज़ादु आहियूं, असांखे अञा वधीक कमु करणु घुरिजे ऐं इनशाला जेसिताईं साथ सलामत आहे त सिंध जे लाइ कमु करणो पवंदो. ऐं साईं GMSyed जी तमामु हिकिड़ी वॾी शख़्सियत हुई, उनजे लाइ जेतिरो ॻाल्हाइजे ओतिरो घटि आहे. उन जो इहो ई वॾी ॻाल्हि आहे त उन इंट्रोड्यूस करायो शाह लतीफ़ साहिब खे. उहो त पाण वॾी शख़्सियत हुई पर मसण वारी ॻाल्हि त उनखे जस्ट सिर्फ़ु जेको आहे सो सूफ़ी खे सम्झो वेंदो पर साईं असांखे बहितर वे में इंट्रोड्यूस करायो जो असां हर जॻह ते अॼु शाह भिटाई खे असां ॿुधूं था, उनखे ॻायूं था तमामु बेस्ट वे में.
बस मां एतिरो लफ़्ज़ चवंदुमि ऐं जेम साहिब जी महिरबानी आहे जो अॼु असां हिते वरी इकठे आया आहियूं साईं खे बर्थडे जी मुबारक हुजे हा त शायदि असां हुनखे गॾु वठी पाण गॾु हुजे हा अॼु साईं असां सां दिलनि में गॾु आहे फिज़िकली भली न हुजे पर दिलनि में साईं असां सां गॾु आहे असां साईं जी सन महिरबानी साईं क्या शेख अभी मेमोर डॉक्टर जुल्फकार नई बॉडी साना जी आई है मुझे लगे यकीन तव्हां वटि साना जे प्लेटफॉर्म ते मां साना जो मेंबर आहियां या प्रोग्राम हूंदो तव्हां वटि पर वी लुक फॉरवर्ड ऑफ कोर्स मुमताज बि अथव हा त साईं उहिदेदार आहे हा त तव्हां वटि तव्हां यकीनन सियासी समाजी ऐं जेके सकाफ़ती इशूज़ ते ज़रूरु तव्हां वटि प्रोग्राम हूंदा उन्हनि खे उजागर करण जे लाइ ऐं तव्हांजा जेके बि शयूं हूंदियूं प्रोग्राम हूंदा वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे ऑर्गेनाइज़र जे हिसे सां मां तव्हांखे चवां थो त असां हमेशह तव्हां सां गॾु हूंदासीं जेका सपोर्ट हूंदी असां बिल्कुलु कुल में मिलाए तव्हां सां गॾु हूंदासीं महिरबानी आसिफ साईं तव्हां जेको आहे सो नई बॉडी खे वेलकम बि कयो पर जीअं साईं चयो अथव किंग मेकर खे कॾहिं बि न विसारिजो ईअं न कंदा कयो शेख साहब महिरबानी आवाज़ पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो ऐं जीअं त तव्हां जेका साईं जे वञण जी ॻाल्हि कई त जुमन दरबदर जो शेर तमामु मशहूरु आहे त वठी हर जनम वरबो मिठा महिराण में मिलबो अॼु असां सां साईं जेको आहे उहो हर जॻह ते मौजूदु आहे जिते बि सिंध आहे सिंधी आहिनि त उते हर जॻह ते साईं जेको आहे असां सां मौजूदु आहे हिकिड़ी ॿी अदी असां सां गॾु जेका मौजूदु आहे उहा अदी ख़ासि तौर ते अमेरिका खां हिते सीड़जी आई आहे अदी शाहिदा मेमन जेका इंटरनेशनल सिंधी वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन अमेरिका चैप्टर जी जेको हिसो आहे सो अदी शाहिदा खे मां गुज़ारिश कंदुसि त अदी अचे ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे अदी शाहिदा मेमन मुझे ख्याल में तो तव्हां जेको सो कुझु माण्हू मूंखे सुञाणंदा बि हूंदा मां जेको सो पाण सना में बि रही चुकी आहियां सना जी वुमेन वाइस प्रेसिडेंट 2 years ऐं जेको सो मां पंहिंजे आई एम टिकट में रहंदी आहियां USA में ऐं दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम इन पीटरबोरो एंड इट्स रियली ऑनर फॉर मी टू बी हियर टू सी ऑल सिंधीज़ इन वन प्लेस जेको असांजे लाइ ॾाढो डिफिकल्ट हूंदो आहे त असां जेको सो हिकिड़ी जॻह ते सभिनी खे गॾु करे सघूं ऐं ॿियो इहो त मां जेको सो सिंधी वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन ISW इंटरनेशनल सिंधी वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन सां बि रिलेटेड आहियां असांजो जेको सो चैप्टर आहिनि जेके UK एंड USA में आहिनि असां जेको सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ते कमु कंदा आहियूं पोइ उहा फोर्स कन्वर्जन हुजे असां फोर्स कन्वर्जन ते काफ़ी सारो कमु कयो आहे जेका गर्ल्स जी एजुकेशन आहे उनजी स्कूल्स में जेको कुझु उन्हनि खे बुक्स वग़ैरह खपनि या कुझु बि त एजुकेशन ते असांजो कमु आहे ऐं ॿियो त जेका अर्ली जेका एज माना थिए थी नंढी एज जी शादियूं जेके थियनि थियूं उन्हनि ते बि असांजो कमु थियल आहे ऐं असां काफ़ी सारा जेको सो हींअर वेबिनार बि कया आहिनि पोइ उहे डिफरेंट मौज़ूज़ ते हूंदा आहिनि पोइ उन्हनि में असां जेको सो सिंध मां या USA में जिते बि सिंधी असांजा आहिनि पोइ उन्हनि खे घुराईंदा आहियूं ऐं असां वरी उन्हनि मौज़ूअनि ते स्पेसिफिकली असां ॻाल्हाईंदा आहियूं बाक़ी ॾिठो वञे अॼु त साईं GMSyed जो ॾींहुं आहे ऐं उनजी जेको सो असां सालगिरह मल्हाए रहिया आहियूं त मां एतिरो वधीक न ॻाल्हाईंदमि छो जो इलाही सारा माण्हू आहिनि जेके जिन वटि ॾाढो सुठो आहे ॻाल्हाइण जे लाइ त मां सिर्फ़ु इहो चवंदमि त मां पाण बिलीव कंदी आहियां त एजुकेशन ते मां पाण 30 जी आहियां ऐं मुंहिंजो जेको सो वोट जेको सो धड़ो आहे जेकॾहिं कंहिंखे ख़बर हुजे त असांजो जेको सो एजुकेशन ते ॾाढो माना फोकस हूंदो हो त असांजे पेरेंट्स असांखे एजुकेशन ॾियारी त मुंहिंजो जेको एजुकेशन ते ॾाढो हूंदो आहे मां हाणे जेको सो ब्रेनफर्ड में असांजी सिटी आहे हुनजी मां काउंसलर रही चुकी आहियां ऐं लास्ट ईयर ऐं ॿियो हाणे हुनजी मां एजुकेशन जेका कमेटी आहे उनजी मां मेंबर बि आहियां त असां ओवरऑल एजुकेशन सां रिलेटेड जेके बि इशूज़ हूंदा आहिनि असांजे नंढड़ी सिटी में ब्रेनफर्ड में त असां उनखे उनजी मीटिंग्स वग़ैरह में वेंदा आहियूं अटेंड कंदा आहियूं ऐं उनजा जेके बि माना इशूज़ वग़ैरह हूंदा आहिनि पोइ उहो असां जेको सो पंहिंजी टीम सां शेयर कंदा आहियूं त जेकॾहिं ॾिठो वञे त साईं GMSyed बि एजुकेशन ते ॾाढो ज़ोर ॾिनो हुयो उन्हनि त इलाही
माना इलाही सारियुनि ॻाल्हियुनि ते हुयो जीअं माना जेको सो उन दौर में उन जेको सो पंहिंजी धीअ खे जेको सो PhD कराई आई थिंक उनजो बैकग्राउंड इहो हो त हू पाण जेको सो अकेली माउ जो पुटु हुयो ऐं पंहिंजी उनखे पंहिंजी माउ ऐं पंहिंजी मासीन पालियो हो त उनखे इहा जेको सो बैकग्राउंड में हुई त जेका सो वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट इज़ रियली इम्पोर्टेंट त मां जेको अॼुकल्ह ॾिसां थी माना इवन दो हिते ऐं या जेको सो सिंध में बि जेके ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि इलाही जेके वुमेन सां रिलेटेड ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि उनमें त मायूं एक्टिव आहिनि औरतूं पर हिते मां ॾिसां थी त ॾाढी माना घटि जेको सो पार्टिसिपेशन आहे वुमेन जी इवन दो जीअं अॼु माना मां हिते आयल आहियां असां त माना जेको सो अदा हाजन वटि काफ़ी सारो माना असां खे प्लान ठहियो पियो त असां अचूं पर असां चयो हीउ सुठो मौक़ो आहे त असां अचूं पर जॾहिं मां आयमि त हीउ ॿुधो त 60 माण्हू त हिते अचनि पिया गेस्ट पर उनमें का बि माना जेको सो वुमेन पार्टिसिपेशन न आहे जेकॾहिं आहे त सिर्फ़ु दुआ आहे या फिज़ा आहे उहे ॿई थियूं ॻाल्हाइनि ऐं ॿियो केरु माना जेको सो माइन जी माना वुमेन पार्टिसिपेशन असां वटि ॼण त 0 आहे त जेकॾहिं असां सिंध में चऊं त असां वटि 50% असां वटि जेका न औरतूं आहिनि माना त असां इहो चऊं त माना 50% तव्हां जेको सो वुमेन खे माइनस करे छॾियो माना कटे छॾियो उन्हनि खे त मुंहिंजो इहो हूंदो आहे त तव्हां प्लीज़ जेको सो जेके बि आहियो औरतूं भले 2-4 लफ़्ज़ ई ॻाल्हायो माना पॉलिटिक्स खां सवाइ हूअं ई कुझु बि न थींदो आहे माना इवन दो GMSyed पॉलिटिकली एक्टिव ऐं पॉलिटिक्स जे ई थ्रू सभु कुझु खणी आयो हो त पॉलिटिक्स में जेकॾहिं तव्हां पॉलिटिक्स में न ईंदो त कीअं कमु थींदा असांजो एजुकेशन जो जेको सिस्टम आहे इट्स रिलेटेड इन पॉलिटिक्स छो जो ज़ाहिर आहे तव्हां एजुकेशन सां जेको बि लॻाए रहिया उहे तव्हां खणी ईंदो तव्हां एजेंडा उते ॾिसंदो तॾहिं ई उहे जेको सो वञी हल थींदा माना ईअं पॉलिटिक्स खां सवाइ कोई बि कमु नथो थिए त तव्हां भले 2-3 लफ़्ज़ ई ॻाल्हायो पर प्लीज़ तव्हां जेको सो वुमेन पार्टिसिपेशन अचणु घुरिजे ऐं जॾहिं बि असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त चवंदा आहिनि त औरतूं पाण नथियूं अचनि त आई थिंक थोरी जेका न पुश ज़रूरी हूंदी आहे सभिनीनि खे माना इवन दो मां जेको सो सिंध यूनिवर्सिटी मां मुंहिंजी मास्टर्स थियल आहे कंप्यूटर साइंस में पर मुंहिंजे हस्बैंड जी जेकॾहिं मुंहिंजो साथ न हुजे हा त मां जेको न USA मां डिग्री न वठां हा ऐं वरी जॉब बि न करियां छो मां हेल्थ केयर में मां जॉब बि कंदी आहियां मूंखे 2 पुट बि आहिनि ऐं मां जेको सो डिफरेंट माना प्रोजेक्ट्स खणी करे उन ते कमु बि कंदी आहियां त मुंहिंजो जेको हिते ॻाल्हाइण जो इहो मक़सदु हुयो त मां जेको सो तव्हां सभु बिलीव असां सभु करियूं था GMSyed जी एजेंडा ते त उहो हिकिड़ो इहो त आहे त एजुकेशन एंड वुमेन पार्टिसिपेशन सो इहा ॾाढी इम्पोर्टेंट आहे जेकॾहिं थी सघे त तव्हां प्लीज़ थोरी पुश करे तव्हां पंहिंजी जेको सो औरतुनि खे अॻियां आणियो त जीअं उहे पंहिंजे ॻाल्हाइनि भले ॿारनि जे मसइलनि ते ई ॻाल्हाइनि भले कुझु बि हुजे लैंग्वेज ते ॻाल्हाइनि केॾो वॾो माना असांजी सिंधी लैंग्वेज असांजो इहो आहे त सिंधी मुंहिंजो पाण मसइलो इहो आहे मुंहिंजो वॾो पुटु सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे नंढो पुटु सिंधी सिर्फ़ु सम्झंदो आहे त असांजो इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां लैंग्वेज ते ॻाल्हाइण चाहियो थियूं जेकॾहिं तव्हांखे उन में बि थोरो कुझु आहे त तव्हांखे गाइडेंस खपे तव्हां अचो ऐं ॻाल्हायो ऐं ॿुधायो त छा असीं जेको सो हेल्प करे सघूं था तव्हांजी त वुमेन पार्टिसिपेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट एंड एजुकेशन सो उनजे करे जेको सो मां हिते आई आहियां बाक़ी हिकिड़ी पोइट्री आहे मुंहिंजी दोस्त आहे ज़ायदा अबड़ो उन मूंखे मोकिली आई वुड लाइक टू रिसाइट विजूद तुंहिंजे में जेके ॿरी उजामनि था सदा से ख्वाब सुहाना खणी अचनि था नसीब जिन खे छिनेदार तोखां कयो से सीने ते तुंहिंजे अमान चाहिनि था टुटा पसा जेके थी तोखां परे से जीअण लाइ ॿीहर उॾामण चाहिनि था ज़बान जिन जी खसी आहे कोई गैर वियो से लोली तुंहिंजी में ॿीहर कलाम चाहिनि था चपन चखियो अमृत सिंधु जो जिन आ मदाम पंहिंजे चपन ते उहो ई चाहिनि था थैंक यू सो मच आख़िर में मां हिकिड़ो लफ़्ज़ चवंदमि त मां पाण जेको सो ISW सां आहियां त असांजो जेको सो चैप्टर आहिनि जेके UK में आहिनि USA में आहिनि बट मुंहिंजो इहो आहे त हिते जेको सो असांजा इलाही सारा सिंधी आहिनि त असां जेकॾहिं हिते बि हिकिड़ो चैप्टर खोलियूं सो मां हिकिड़ो जेको सो पेज ठाहियो आहे उते पुठियां मां रखियो आहे ऐं उनमें ईमेल एड्रेस ऐं नालो जेकॾहिं तव्हां लिखो ऐं तव्हां जेकॾहिं इंट्रस्टेड आहियो ऐं जेकॾहिं न बि इंट्रस्टेड आहियो त थोरो इंट्रस्ट थी ॾिसो
थोरो अची ॾिसो त असां छा था करियूं ऐं असांखे गाइड करियो त जीअं असां जेको सो वधीक ॿिया कम करे सघूं. थैंक यू सो मच एंड जी एस महिरबानी यदि शायदा वहाँ जेको आहे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो. तव्हांखे आवाज़ सभिनी खे पूरो अचे थो सही या माइक जी ज़रूरत आहे? माइक जी ज़रूरत न आहे. ज़रूरत हिनखे पोइते रखो, हिनखे पोइते रखो, इनखे पुठियां रखो. हा हिनखे पोइते रखोसि. मां सम्झो त असां सभिनी जो आवाज़ ॾाढो उहो आहे. हाणे सही थो अचे? सही आहे. महिरबानी साईं. अदी महिरबानी अव्हां जी. अव्हां जेको आहे औरतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई. यकीनन असां हिकु कोशिशि कंदासीं त पंहिंजूं जेके मायूं आहिनि उन्हनि खे अॻिते कयूं, असां पाण पोइते हुजूं. त थियणु ईअं खपे हा तव्हां सभई पोइते हुजो, हा मायूं अॻिते हुजनि, त अदीअ जी ॻाल्हि बि पूरी थी वञे. अदी पाण बि जेको आहे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही आहे ऐं पाण बि जेको आहे अमेरिका में. अदी तव्हां छा काउंसलर हुयो पॉलिटिक्स में? लास्ट ईयर मां काउंसलर हुयमि पंहिंजी सिटी मां रन कयो हुयो. अच्छा मुबारक. उन खां पोइ वरी मां रन न कयो इन करे जो मुंहिंजी पंहिंजी जॉब ऐं ॿार आहिनि. पर नेक्स्ट ईयर होपफुली अगेन. पर वरी बि तव्हां अलाए हिकिड़ो मिंट नेक्स्ट टाइम मां अचां न त तव्हां प्लीज़ असांखे अॻियां जॻह ॾिजो. तव्हां पुठियां मां बि तव्हां सां गॾु आहियां. असां माइन जा मारियल आहियूं. असांखे जेका हींअर गफूर बेतो साहिबु चए थो त बाबा इहो पंहिंजो असां माइन खे अॻियूं था कयूं, असांखे मार थियूं ॾियनि. अदा मुमताज़ जी हाणे अची आई आहे तो कंदी मथे नथो करे. सो महिरबानी. सो एनीवे सो हिकिड़ी ॿी जेका शख़्सियत प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे असां वटि जेका मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि. अदा सभिनी जीअं सुठो ॻाल्हायो. साईं हमारे पास एक और शख्सियत मौजूद है, मुमताज़ कश्मीरी साहब हमारे पास मौजूद हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड सेंटर फॉर पीस से रिलेटेड है. साईं से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें. मुमताज़ कश्मीरी साहब. शुक्रिया. मैं वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का मशहूर हूँ कि उन्होंने ये थोड़ा सा खराब किया. हाँ थैंक यू. तो आज मौजूद जो है वो साईं GM सैयद की शख्सियत है. उनका जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स के अंदर और दीगर जो है वो उनका ज़िंदगी के दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर उन्होंने जिस तरीके से काम किया तो वो एक हमारी मैं समझता हूँ शख्सियत है जिन पे अगर बोलना चाहे तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हम यहाँ सारे जो इकट्ठे हुए हैं तो GM सैयद के जो सियासी अफकार हैं उनके तनाज़र में उसके पस मंज़र में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने जो वो फ़िलॉसफी दी है सिंध, न सिर्फ सिंध के हवाले से बल्कि पाकिस्तान के मसाइल के और कौमियतों के मसाइल के हवाले से वो ज़्यादा जो है वो अहम है. आज के जो वक्त है जो हालात है पाकिस्तान के अंदर उसमें और भी ज़्यादा GM सैयद की फ़िलॉसफी जो है वो अहम बनती है. और मैं समझता हूँ हम तमाम लोग जो है वो तमाम लीडर लोग जो है वो हम सारे इफ़्काई अमल से गुजरते हैं और अपनी गलतियों का भी जो है वो अज़ाला करते हैं. GM सैयद शायद वो वाहिद हैं कौमियतों में वो लीडर थे जिन्होंने उस वक्त एक पाकिस्तान की जो है वो सपोर्ट की और इस तनाज़र में सपोर्ट की कि पाकिस्तान एक फेडरेशन नहीं बल्कि फेडरेशन के तौर पे सामने आए. लेकिन शायद उसके बरक्स हुआ तो GM सैयद भी अपने इत्काई अमल से गुजर रहे थे और उनको इसका एहसास हुआ तो उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, सियासी ट्रांसफॉर्मेशन आई, फिक्री ट्रांसफॉर्मेशन आई, नज़रियाती ट्रांसफॉर्मेशन आई जिसके नतीजे में उन्होंने उसका अज़ाला न सिर्फ ये कि जेलों में रह के किया बल्कि जो है वो किताबें लिख के अपनी जो है वो नज़रियात को जो है वो फैला कर और सिंधियों की जो है वो तशख़्ख़ुस की बात करके सिंध की जो है वो कौमी हुकूक की बात करके सिंध को एज ए कौम रिकगनाइज करने की बात करके उन्होंने मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बाकी कौमियतों को भी ये एक पैगाम भेजा.
और मुझे खुद पता है कि मैं हाई स्कूल करके जब कराची गया, सिंध गया, तो मेरी सारी जो है वो नजरियाती तरबियत जो हुई है, सियासी जो तरबियत हुई है, और जो सेकुलर एक सूफी जो है सोच सीखी है, वो सिंध के अंदर से है। वो सिंधी नेशनलिज्म से सीखी है, सूफी इज्म से जो है वो सिंध के अंदर जो है वो सीखी है। और आज अगर हम देखते हैं तो जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरह वहाँ पे फौज का कंट्रोल है तमाम पाकिस्तान पर, सियासत से लेके माइशत से लेके सकाफत तक, अगर आप देखेंगे कल एक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की एक न्यूज़ थी वहाँ पे, जिसमें वहाँ कोर कमांडर जो है वो सदारत कर रहा था, और कोर कमांडर यूनिवर्सिटी को बता रहा था, तमाम असातिज़ा वहाँ पे बैठे हुए थे कि आपने यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है। तो ये आज के पाकिस्तान की जो है वो हकीकत है। इसी तरीके से आपने देखा कि पिछले 6 सालों के अंदर सिर्फ एक जनरल ने 5 जो है वो वज़ीर आज़म कर दिया, और वो स्टिल आज जो वो अगर बदला, लेकिन उस जनरल की शक्ल में एक दूसरा जनरल पाकिस्तान को चला रहा है, और वहाँ पे ऐसी सियासी हुकूमतें बराए नाम रखी जाती हैं दुनिया से जो है वो भीख मांगने के लिए, दुनिया से जो है। आज वो पाकिस्तान है कि जिसके पास जो है वो फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुका है, जो पॉलिटिकली जो है वो अनस्टेबल है। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि GM सैयद ने जो मैसेज और जो अपना उस वक्त है, उनको एहसास हुआ कि मैंने इस पाकिस्तान की बात नहीं की, मैंने इस सोच की हमायत नहीं की कि जहाँ पे मुलायत और फौजियत जो है वो हुकूमत करेगी और लोगों के हुकूक जो है वो गसब करेगी। आज आप देखें कि गलगित के अंदर ये पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि आपने कश्मीर का स्पेशल जो है वो स्टेटस खत्म किया। स्पेशल स्टेटस क्या था कि जो महाराजा के दौर में जो स्टेट सब्जेक्ट उसने 1927 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि नॉन रेजिडेंट ऑफ स्टेट जो है वो कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, कुछ वहाँ पे जॉब नहीं उस तरह वो कर सकता है। आज गलगित में जो है वो आपको पता है पिछले 1 माह से जो है वो प्रोटेस्ट जारी है, चूंकि वहाँ पे फौजी जाकर जो है वो अब जमीनें खरीद नहीं रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। वो तो खरीदना तो उनको आता नहीं है क्योंकि वो मुल्क सारा उनका है। तो उस पे कब्जे के खिलाफ वहाँ की लोकल पॉपुलेशन उठी है। फिर लोगों को आज वहाँ खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है, आटे पे जो है वो टैक्स लगाए जा रहे हैं। बिजली, सारा पानी जो है वो वहाँ से आता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो लोगों को बिजली मैसर नहीं है। तो ये वो बुनियादी हक़ाइक़ मैं समझता हूँ कि उसके तनाज़र में GM सैयद की जो फ़िलॉसफ़ी है, जो सोच है, वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट बनती जा रही है, आज और भी ज़्यादा रेलिवेंट है। और मैं समझता हूँ कि यही ट्रिब्यूट जो है वो हम GM सैयद को पेश कर सकते हैं कि आज उस सोच के लिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा जो है वो लोगों का ध्यान उस तरफ खींचा जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पे। ख़ासतौर ते जॾहिं पाण ॻाल्हायूं त साईं GM सैयद जी, त जीअं साईं जे फ़लसफ़े जी ॻाल्हि कई साईं, त साईं शुरू खां वठी पैगाम लतीफ़ खां वठी करे सिंध जे हर मसइले ते, सिंध जो कल्चर हुजे, सिंध जी सकाफ़त हुजे, या सिंध जा जेके उहे पोइते पयल मसला जेके आम माण्हू खे सम्झ में नथा अचनि, साईं उन दौर में बि वॾे हिकिड़े सघारे आवाज़ सां, सघारे अंदाज़ सां जेके आहिनि उहे माण्हुनि जे साम्हूं रखिया, जेके अॼु असां तव्हांखे पढ़ण सां ख़बर पवे थी त साईं केतिरो जेको आहे सो गहरे अंदाज़ सां सोचींदो हुयो, ऐं केतिरे परे हिकिड़ी जेका हुनजी साईं जी दूर वारी जेका नज़र हूंदी केतिरी ज़बरदस्त क़िस्म जी हूंदी हुई। ऐं ईअं बि जॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कजे थी त सिंध में तमामु वॾा माण्हू, सिंध तमामु वॾा माण्हू पैदा कया, जिन पंहिंजे जेको आहे सो अनल हक़ जा नारा लॻाया, जिन सदाए सिंध बुलंद कई, जेके कलंदर थिया, जेके भिटाई थिया, जेके सचल थिया, बैदल थिया, बेकस थिया। सिंध सदाई जेको आहे हर लिहाज़ खां, उहो चाहे कल्चर हुजे, सकाफ़त हुजे, या असांजी ॿोली हुजे,
हर लिहाज़ खां जेको आहे तमामु अॻिते रही आहे ईअं ई जेको आहे सो अॻिते प्रोग्राम खे वधाईंदे करे हिकिड़ी ॿी जेका महिमान शख़्सियत असां वटि मौजूदु आहे पाण कॉलमिस्ट आहिनि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहिनि ऐं तमामु घणो जेको आहे सिंध जे मसइले ते या जेकॾहिं को बि इशू हुजे त साईं बराह रास्त उन्हनि ते तमामु घणो सुठो लिखनि था अहले कलम आहिनि असां वटि हिकिड़ी शख़्सियत मौजूदु आहे साईं नासिर जमाल पठान साहिबु साईं खे गुज़ारिश आहे साईं अचण पाए ए सिंधड़ी तोखे भेंट ॾिना किन लुड़क फड़ा किन बाक फड़ा जिन तोखे पंहिंजो खून ॾिनो से सभु पाण मल्हाए विया मुंहिंजा दोस्तो छो जे करे बेसिकली अॼु 15 जनवरी आहे ऐं साईं जी सालगिरह जे सिलसिले में असां गॾु आहियूं त पंहिंजे हिकिड़ी थोरी सोच मुताबिक़ जेका मां सम्झां थो साईं जी सालगिरह जो असुल ॾींहुं 17 जनवरी 1904 17 जनवरी साईं जी आहे पर हाणे वीकेंड जे करे हाजन साहब वारनि रखियो आहे फंक्शन पर जॾहिं हिन मौज़ू ते ॻाल्हायूं था त मुक़ररनि ॿुधायो त जेके नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आहिनि अॼु जो ॾींहुं बि हिकिड़े तमामु वॾे अज़ीम माण्हूअ जे ॼमण जो ॾींहुं आहे जेको आहे डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर किंग अॼु हुनजो ॾींहुं आहे सुभाणे शायदि US में मोकल बि आहे इन वॾे लेवल जो माण्हू आहे उहो माण्हू आहे जेको मिसाली माण्हू आहे ऐं दुनिया में जॾहिं बि असां जेकॾहिं नज़र फेरायूं था त महात्मा गांधी थियो या पंहिंजो साईं GM सैयद सभ खां वॾे में वॾो सिंबल जेको आहे असां वटि आहे जेको नॉन वायलेंट शुरू खां वठी रहियो आहे ऐं असां उनखे उन लेवल ते हाईलाइट न कयो आहे मुंहिंजी हिकिड़ी गुज़ारिश इहा हुई ॿी ॻाल्हि इहा हुई त जेको आहे पंहिंजो टाइम खे बचाइण जे लाइ मां हिकिड़े ख़ासि साईं हाजन साहिबु हिकिड़ी मूंखे हुकुम कयो त यार तव्हां इन मौज़ू ते मां हिकिड़ो मुख़्तसर हिकिड़ी शइ ते ॻाल्हाइण थो चाहियां त सिंध में जेका आहे 1 फरवरी खां सिंध न पाकिस्तान में 7वीं आदमशुमारी शुरू पई थिए पर उनजो जेको प्रोसेस आहे उहो अॼु खां शुरू थी वियो आहे ऐं उनमें जेका इम्पोर्टेंट जेका शइ जेका मां तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाइण थो चाहियां उहा इहा आहे त अॼु गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हिकिड़ी एप इंट्रोड्यूस कई आहे छाकाणि जो सिंध मां पंहिंजे सिंध जे हवाले सां ॻाल्हि कंदुसि ॿाहिरि कोन निकिरंदुसि मूंखे पंहिंजी सिंध जी फिक्र आहे त जेको थोरो घणो जेको लास्ट 2017 में जेका सेंसस थी आहे उनमें जेका डेटा आई त उनमें सिंधी ॿोली ॻाल्हाइण वारनि जो तादाद सभ खां वधीक आहे जंहिंखे 1900 पाकिस्तान में जेके 6 आदमशुमारियूं थी चुकियूं आहिनि ऐं ही 7वीं आदमशुमारी आहे 1998 में 1998 में जेका आहे 5वीं आदमशुमारी थी हुई वरी 19 साल थी न जॾहिं त कानून ऐं आइन मुताबिक़ हर 10 साल आदमशुमारी थियणी आहे 19 साल हिननि पंहिंजी बादशाही करे कई कोन वरी 2017 में आदमशुमारी थी जेका लास्ट आदमशुमारी आहे जंहिंमें असां सिंधी अञा बि मुतमइन कोन आहियूं छाकाणि जो असांजा खोड़ शयूं असांजूं रहिजी वयूं आहिनि असांजी अञा पूरी आबादी असांजे ॻोठनि जी असांजे जेके माण्हुनि जी तालीम जी घटिताई जे करे उहा न थी सघी आहे त 2017 में जेका आदमशुमारी जेका डिक्लेयर कई ऐं उन्हनि खे जेको उन्हनि कंहिं लेवल ते एक्सेप्ट कयो पर असांजे जेके सिंध में जेके राइवल्स आहिनि ऑनेस्टली मां स्पीकिंग ओपनली त असांजी सिंध सूबे जी जेका आहे पंहिंजी जेका आइडेंटिटी जा जेके राइवल्स आहिनि उनमें ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो थो थींदो वञे उहे इहो चाहिनि था त सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील कीअं कजे ऐं उन जे लाइ हू ॾाढो जेको आहे कोशिशूं करे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा हरबा हलाइनि था त इहो कॾहिं बि न थियो आहे त तव्हांजी आदमशुमारी 2017 में थी आहे वरी 4 सालनि खां पोइ वरी तव्हांजी मथे आइन जी ख़िलाफ़ वर्जी पहिरीं मां उनखे निंदियां थो उन खां पोइ जेको ॿी शइ जेका इम्पोर्टेंट शइ मां मुख़्तसर जो टाइम जे बचाइण लाइ चवां थो ॿी हिकिड़ी त गुज़िरियल आदमशुमारी में जेके प्रोटोकॉल्स या पैरामीटर्स रखिया विया हुया उनमें मुख़्तलिफ़ हुया त बाबा तव्हांजो नेशनलिटी छा आहे तव्हां पाकिस्तानी आहियो अफ़गानी आहियो बांग्लादेशी आहियो या अधर आहियो अधर में उहो तव्हां पंहिंजो लिखो उनमें जेका हिन वक़्तु सिंध में इशू हले पियो उहो हले पियो ॿोलीअ जो इशू असांजी सुञाणप असांजी धरती आहे असांजी सुञाणप असांजी ॿोली आहे जेका सिंधी ॿोली आहे त गुज़िरियल आदमशुमारी में जेको प्रोटोकॉल रखियो हुनमें 10 ज़बानूं जेके उनमें शामिल हुयूं त
तव्हां कहिड़ी ॿोली ॻाल्हायो था ऐं हींअर जेका 1 फेब्रुआरी खां जेका आदमशुमारी थिए थी इन्हनि में अञा थो वधाए छॾियो अथऊं 16 ज़बानूं करे छॾियूं अथऊं असांखे विरहाइण जा हरबा हलनि पिया था तंहिंजे करे जेके मां ॾाढो ॾिसां थो जेके माशाल्लाह मां जेके दोस्त अॼु बि मिलिया आहिनि अधी असांजी भेण अमेरिका मां शायदा जेका आई आहे सभु दे आर बिलोंग्स टू द IT त असांखे उन्हनि माण्हुनि खे पंहिंजो रोल अदा करिणो आहे जीअं अदी चयो त बाबा तव्हां पंहिंजी औरतुनि खे वठी अचो त मां चवंदुसि असांजूं औरतूं भेणूं असांजा जेके नौजवान ITs बि आहिनि दे हैव टू प्ले देयर रोल नाउ छाकाणि जो हिननि वरी हिनखे लिबादो IT जो ॾिनो आहे ऐं हीअ जेका आदमशुमारी शुरू पई थिए 1 फेब्रुआरी खां उन में IT बेस्ड आहे जंहिंमें हू टेबलेट्स ॾियनि था माण्हुनि खे असांजे माण्हुनि खे वीचारो मोबाइल बि नंढड़ा नंढड़ा खीसे में रखियो अचनि उसमें कंहिंजा अखर मिटिया पिया तंहिंजे लाइ वी हैव टू पार्टिसिपेट एनी वे टू सेव अवर आइडेंटिटी असांखे उन में पार्टिसिपेट करिणो आहे हाणे मूंखे ख़बर न आहे मां अञा छो जे करे साईं मूंसां हींअर ॻाल्हि कई त मां थोरो हुनखे स्टडी न करे सघियो आहियां त जेका एप ॾिनी वई आहे तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त इहो उन ते थोरो गौर कजो ऐं थोरो रिसर्च करे इनखे प्रोमोट कयो एप ॾिनी वई आहे त एप में तव्हां पंहिंजी सॼी बायोडेटा ॾियो था तव्हां दुनिया में किथे बि हुजो पाकिस्तान में हेॾा जेको बि आहे तव्हां हुन में पंहिंजी ॾियो उन खां पोइ जॾहिं तव्हां उहा पंहिंजी इंफॉर्मेशन फिल कंदा पंहिंजी स्पेशली लैंग्वेज जी असांजे माण्हुनि जो तमामु घणो किरदारु आहे ऐं इहे माण्हू हाणे फील्ड में वञनि जिन माण्हू खे न आहे उहो मोबाइल फोन खणी वञे उन खां पोइ छा थो थिए जॾहिं तव्हां इंफॉर्मेशन एंटर कंदव दे हैव जनरेट अ कोड उहो पने ते लिखी उन हमरा खे ॾेई छॾो पोइ जॾहिं हू टेबलेट वारा ईंदा दे हैव टू जस्ट प्रोवाइड द कोड उहो कोड विझंदा सॼी इंफॉर्मेशन तव्हांजी अपडेट थी वेंदी हिकिड़ी शइ आहे इहो तव्हां महिरबानी करे इहो मैसेज जेको आहे असांजी सिंध में जिते बि पंहिंजा तव्हांजा राब्ता आहिनि जिते नेटवर्क आहे उन्हनि खे ॿुधायो जेके न आहिनि त नौजवान तयारु कयो जेके बेसिक IT जे नॉलेज आहे फोन जी एप खणी वञो उन्हनि जा ठाहींदा वञो डेटा उन्हनि जे फोननि ते डेटा ठाहे ॾियो उनखे कोड कढी ॾियो बाबा अचनि हिनखे ॾेई छॾिजो हीअ जेके टेबलेट्स ते अचनि था इहा हिकिड़ी तमामु इम्पोर्टेंट शइ आहे त इहो तव्हां महिरबानी करे पैगाम जेको आहे ऐं ॿी जेका शइ जेको इशू हले थो त मां त हाणे सची ॻाल्हि इहा आहे त जेके मां 10 ॿोलियूं ॾिठियूं हाणे उहो उनमें जेके हाणे जेके 4, 5, 6 ॿोलियूं जेके ॿियूं आहिनि एड कयूं आहिनि उनजो सिंध सां बि कंहिं लेवल सिंध सां त हर कंहिंजो आहे न साईं सिंध आहे बेसिकली यतीम खानो जेके बेसिकली यतीम खानो कल्ह मूं हिकिड़ो बयानु पढ़ियो आहे त उन मूंखे हैरानगी थी चए बाबा असां त पाकिस्तानी आहियूं कुझु PTI जा हुया लीडर कराची में चए बाबा असां त पाकिस्तानी आहियूं महाजर ते क्यों मारनि असां पाकिस्तानी आहियूं छाकाणि हू पाण खे न सिंधी था सॾनि न जेको आहे पंहिंजो पाकिस्तानी त ख़ैर उन्हनि हाणे हालात तव्हां ॾिसो पिया TV ॾिसंदा हूंदव तंहिंजे करे अला ॿियो जेको मुंहिंजी गुज़ारिश आहे उहा इहा आहे त असांजे माण्हुनि खे असां में इहो बि आहे साईं बरोच ऐं साईं हवाई बरोच आहे हाणे जे शहाणी तव्हां ॾिसो त क्रिकेटर असां यूसुफ साहिब असांजो माशाल्लाह क्रिकेट जो चैंपियन आहे वेठो आहे त ॾहाणी जेको क्रिकेटर आहे शाहनवाज़ ॾहाणी उन असां सिंध उनखे तमामु मथे अप कयो तमामु प्रोमोट कयो नौजवाननि ख़ासि तौर ते फैज़ल साहब वेठो आहे ॿिया वेठा मां ॾिसंदो आहियां उनजूं पोस्टूं उन हिकिड़ी ग़लती कई इंसान आहे ह्यूमन एरर थी सघे थो उन वरी पाण खे जॾहिं असां सिंधी न मां बरोच आहियां त हाणे इहो वेठो लाड़काणे में आहे हाणे लाड़काणो बेसिक हाणे मां पठान आहियां ऑनेस्टली मूंखे पछतो जो पे बि न ईंदो आहे आई डोंट नो मैं प्योर सिंधी आहियां मुंहिंजो पछतो मां चवंदो हुजे न अरबी में चवंदा आहिनि त बाबा उहो गारियूं थो ॾींदो वञे सम्झे बि क़ुर थो पढ़े अहिड़ी तरह पछतो में बि मूंखे केरु चई वञे मूंखे ख़बर न पवंदी त अदा ॻाल्हि इहा आहे त ॿी जेका आहे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त सभु ॿोलियूं छॾियो हुनखे चयो सिंध में जेके वेठा आहियो न तव्हां गिरोही आहियो न तव्हां सराइकी आहियो न तव्हां जेके ॿियूं असांजूं सिंध जूं जेके थर में असांजूं ॿोलियूं थियूं ॻाल्हायूं वञनि या लाड़ जी ॿोली आहे त बाबा लाड़ी ॿोली फलाण उनमें न आहे ॿियूं ओतिरियूं न पर इहो मोशन वञे हिकिड़ो त तव्हां जेको आहे पंहिंजी ॿोली सिंधी ॿोली लिखो ऐं जेको ॿियो इहो त जेको IT जो फैक्टर आयो आहे हिन में तमामु वॾा एरर ईंदा असांजा जेके नौजवान आहिनि सिंध में बि हितां बि वर्ल्ड वाइड जिते बि आहिनि उहे पैगाम ॾियो हिकिड़ियूं टीमूं ठाहियो अञा जो 15 ॾींहं पिया आहिनि जेके लोकली वञी करे उन्हनि माण्हुनि खे ट्रेन कनि माण्हुनि खे हेल्प कनि ट्रेन न कनि हेल्प कनि बाबा मोबाइल खणी अचो हीअ एप डाउनलोड करे ॾियो उनजा नाला एंटर करे ॾियो एंटर करे उहो कोड वठी रखी छॾियो पने ते लिखी
जीअं ई तव्हां वटि अचे टीम उहो टेबलेट्स खणी ईंदा न उन्हनि नादरा वारनि जी हा भाई के छा कंदा आहियो ठक 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 करे त जॾहिं तव्हां कोड ॾींदो त डेटा तव्हांजी तरफ़ां हूंदी बसि इहा ई मुंहिंजी गुज़ारिश साईं आप एड कयो हिन में त वॾो ॿियो कंसर्न इहो आहे त हींअर जेको शनाख्ती कार्ड जो शर्त ख़तमु कयो अथनि त उन में केर बि उन में तव्हां करे सघो था इहो बि बिल्कुलु आसिफ साहब जेका चई आहे त इहा बि हिकिड़ी वॾी जेका आहे इम्पोर्टेंट शइ आहे त हिननि शनाख्ती कार्ड जी ख़तमु करे छॾी आहे कंडीशन त न जेको आहे भले तव्हां शनाख्ती कार्ड उसूलन त उन में बि वॾा एरर्स थियल आहिनि असां सिंध में वॾियूं वेसाघाटियूं थियल आहिनि ऐं अफ़सोस त असांजा पंहिंजा सिंधी बि उन्हनि में वॾियूं लखे रुपया रिश्वतूं करोड़ रुपया रिश्वतूं वठी उन्हनि लखे करोड़े जेके गैर कानूनी शहरी आहिनि असांखे उन सां एतिराज़ न आहे जेकॾहिं लीगली केरु हाणे असीं पाण वी आर आल्सो द इमिग्रेंट्स असां हिते आहियूं असांखे रिस्पेक्ट पर वी डू रेस्पेक्ट इंडिजियस पॉपुलेशन कैनेडा जी गवर्नमेंट जेको हिते इंडिजियस पीपुल सां थियो हुयो ॾोह थियो हुयो ऐं उन्हनि खे वीचारनि खे स्कूल मां कढियो अलाए सवे ॿारनि जूं लाशूं मिलियूं हुयूं त जस्टिन ट्रूडो सभिनि खां माफ़ी वरिती ऐं उन्हनि जे लाइ हुननि कानून ठाहियो आहे उन्हनि जे लाइ बाक़ाइदा राइट्स आहिनि हाणे इहो आहे त आख़िर में मां इहो चवंदुसि त महिरबानी अञा बि तव्हां होश न वरितो त पोइ आबदा परवीन जो मां कलाम ॿुधंदुसि अलाह ईअं न थिए जो किताबनि में पढ़ ॾिसजे का हुई सिंध वारनि जी ॿोली होशियारु थियो ऐं पंहिंजो जेको आहे इन हेॾनि ॾींहंनि खे जेके तव्हांजा 2-3 हफ़्ता अचनि था हिन जो पंहिंजो किरदारु था कयूं अदा GSM जी साईं महिरबानी नासिर साईं तव्हां तमामु सुठो जेको आहे सो दोस्तनि जो ध्यानु छिकरायो हिन तरफ़ प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था तमामु घटि टाइम आहे ऐं कोशिशि कंदासीं त जल्दी में दोस्त जेके आहिनि उहो तमामु घटि अंदाज़ में थोरे टाइम में ॻाल्हाइनि हिकिड़ी ॿी शख़्सियत असां वटि मौजूदु आहे थी शायदि आॻुणे जे ॿुधायो त औरतुनि जी पार्टिसिपेशन तमामु घटि आहे ऐं हिकिड़ी ॿी असांजी सदोरी भेण मानायती शानायती भेण जेका सिंध हाउस खे हलाए थी वॾी ॻाल्हि इहा त साईं हाजन कलोड़े खे हलाए थी त माना सभिनी खे हलाए थी असांजी जेका आहे मानायती भेण दी रूही कलोड़ो आहे अचे ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे ऐं मुंहिंजो ख़्याल आहे त कुझु शाइरी पढ़ंदी दी रूही कलोड़ो जी अदी Thank you, Da. Salam, namaste. Good evening in GSM, GM Balochistan, GM Pakhtunkhwa. But तव्हां ये चयो मूंखे लॻे थो त सिंध हाउस जेका आहिनि उहा सभु सिंधी भाइर बलोच भाइर ऐं मुंहिंजा सराइकी भाइर ऐं पश्तून भाइर मिली करे हलाइनि था थैंक यू एवरीबडी तव्हां सभिनी मिली करे सिंध हाउस खे ज़िंदा रखियो आहे थैंक यू ऐं भेनरूं बि ज़ाहिर हिन में किरदार अदा कनि थियूं पयूं जब आप सब लोग हमारे घर पे हमारे गरीब खाने पे आते हैं जिसको हम सिंध हाउस कहते हैं आप सब लोग हमारी इस सिंधी फैमिली का एक हिस्सा होते हैं तो आज के मौके के तवस्सुत से जैसे आप सबको पता है कि साईं GM सैयद की 119वीं सालगिरह है जो कि 17 जनवरी को होती है जैसे कि भाई ने कहा कि वो आज हम वीकेंड होने की वजह से आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई साईं GM सैयद से लेकिन मैंने उनको पढ़ा उनको जाना और बहुत सारे लोग जो उनके साथ रहे उनके करीबी साथी रहे उनकी जदोजहद के साथी रहे उनसे मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा उनकी शख्सियत के बारे में जो अंदाजा हुआ उसके लिए 1-2 लफ्ज कहना चाहूंगी कि जब मुझे अंदाजा हुआ इस बात का कि उन्होंने जदोजहद में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और इतनी लंबी कैद में रहे और अपनी जिंदगी की सब सहूलतें जो वो हासिल कर सकते थे जो उनके हाथ में थी उन सब को भी उन्होंने अपनी जमीन की मोहब्बत पर कुर्बान किया तो मुझे ऐसा लगा कि उनके सच के रास्ते पे उनकी काविशों के साथ उनकी कदर करते हुए उस रास्ते के ऊपर चलना जो है वो किसी भी बंदे के लिए बड़े फख्र की बात होगी उस पर मैंने एक छोटा सा शेर कहा था बैत न करते तो ईमान जाता ना से बैत न करते तो ईमान जाता ना से हम पे उतरी थी मोहब्बत वही की सूरत तो इस जैसे आप सब जानते होंगे कि जितना सच्चा बंदा होता है उसका सफर उतना ही मुश्किल होता है और उस पर एक और जुल्म ये है कि वो तन्हा होता है हर बंदा अगर सच के रास्ते पे चलने लगे तो बेशक तकलीफों का एहसास इतनी शिद्दत से नहीं होता लेकिन जब हम देखते हैं कि आगे हम हैं और पीछे कुछ नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता जरूर होते हैं ये फितरी तकाजा है आपकी नेचर का हम इंसान हैं
लेकिन जो कुछ लोग जाहिर है कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है जहां उनके साथ सख्तियां होती रही, वहां उनका साथ देने वाले भी लोग बहुत थे। तो उनकी सख्तियों की नजर 2 लफ्ज कहना चाहूंगी। मुस्कुराहट लब पे थी मगर आंख का किनारा जरा नम सा था। मुस्कुराहट लब पे थी मगर आंख का किनारा जरा नम सा था। राहतों का नसीब में उसके इम्कान जरा कम था। मौसमों के मिजाज भी उसकी तबीयत के बरअक्स ही रहे। मौसमों के मिजाज भी उसकी तबीयत के बरअक्स ही रहे। जमी ही नहीं उसके हक में आसमां भी जरा कम सा था। बाकी जितने भी यहाँ पे मेरे कॉमरेड भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कुराहट लब पे थी मगर आंख का किनारा जरा नम सा था। राहतों का नसीब में उसके इम्कान जरा कम सा था। मौसमों के मिजाज भी उसकी तबीयत के बरअक्स ही रहे। जमी ही नहीं उसके हक में आसमां भी जरा कम सा था। जितने भी यहाँ अपनी जमीन के लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले, आवाज उठाने वाले जितने भी भाई यहाँ हैं, उन सब के लिए ठीक है, थोड़ी कोशिश सख्त है, दिल थोड़ा सा दुखा हुआ है, साथ जरा कम है, ताकत थोड़ी कम है, मगर सच्चाई का रास्ता है। थोड़ा हौसला कीजिए। हम जीतेंगे जरा तुम हौसला रखो। हम जीतेंगे जरा तुम हौसला रखो। हम गिर गिर कर फिर उभरेंगे जरा तुम हौसला रखो। ये सख्तियां ये मुश्किलें सब वक्ती तकाजे हैं। ये सख्तियां ये मुश्किलें सब वक्ती तकाजे हैं। तकाजे वक्त के बदलेंगे जरा तुम हौसला रखो। कब तक रहेगा वादिये मेहरान पर इस रात का साया। कब तक रहेगा वादिये मेहरान पर इस रात का साया। यहाँ सितारे भी चमकेंगे जरा तुम हौसला रखो। सितम उन जालिमों के हम सब मिल के सहलेंगे। सितम उन जालिमों के हम सब मिल के सहलेंगे। जंजीरें सबकी टूटेंगी जरा तुम हौसला रखो। तुम्हारे घोंसले अब देर तक खाली नहीं होंगे। तुम्हारे घोंसले अब देर तक खाली नहीं होंगे। लौट के आएंगे सब पंछी जरा तुम हौसला रखो। थैंक यू। महिरबानी अजीत, तमाम ॾाढे सुठे अंदाज में तव्हां जेका मोहब्बत जो पैगाम ॾिनो। बेशक सैयद जेको आहे सो सिंध सां मोहब्बत कई ऐं उन मोहब्बत जे ॾोह में तव्हांजे साम्हूं हुन कीअं पंहिंजूं क़ैद वारियूं जेके सोहबतूं गुज़ारियूं। हिते शेर आहे त सिंधड़ी तुंहिंजो नाव वरितुम ॼण कारीहर ते पेर पयूं। सो मोहब्बत जॾहिं तव्हां कयो था त पोइ कारीहर तव्हांजे पोयूं हूंदा। सो इहा मोहब्बत जो इहो हिकिड़ो आहे अंसर आहे। तमामु महिरबानी अदी, तव्हां सुठे अंदाज़ में जेका सो असांखे ॿुधायो। ऐं हिकिड़ी ॿी शख़्सियत जेका आहे उहा असां वटि मौजूदु आहे, जेका तमामु एक्टिव भी आहिनि ऐं तमामु घणो जेको आहे कमेटी सां जुड़ियल आहिनि। सो अब्बास सैयद साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं जो कमेटी ऑफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी एंड कैनेडियन है। सो मेरी दरख्वास्त है कि आप आए और आके हमारे साथ इस खास तौर पे साईं के जन्म के दिन के हवाले से कुछ जो लफ्ज हैं हमारे साथ शेयर करें। साईं अब्बास सैयद। Mehrwani, I am ashamed to tell you, Sindh has been my home for over 23 years, and I always call it Ma Mehran. I always call it Ma Mehran. When I was disposed, when my people were disposed from a land unknown, Ma Mehran, hugged us, gave us the warmth of her bosom, right? And let us grow. And I'm ashamed to say that I can't speak her language. It's a big shame that I can't speak her language. I learned a very few words of Sindhi when I lived in Hyderabad and Khairpur.
In Karachi, I was always went to English school, so I can't speak Sindhi, but I'm ashamed of it. Sir, I thank you very much for he said, Mehran has been my home, as I told you, for 23 years. And it has been given me all the love. One, a stepmother gives, adopts or picks up the child from a roadside and gives her the love. I owe that to her. Okay, I thank you very much for inviting me to speak on this subject. And my comrade friend Imtiaz has spoken what I wanted to speak. And you know, because I think we have a very ideologically very similar, so he spoke whatever I wanted to speak, and he has given you a lot of to speak about sin. I thank you very much for inviting me. Thank you so much, sir. आपको इस बात पे कोई कराहत नहीं होनी चाहिए कि आप सिंधी नहीं बोल सकते. आप ये फील करवा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं सिंधी हूँ, ये बड़ी बात है. एक मरतबा जब आप मेहरान का पानी पीते हैं तो फिर आप कभी भी सिंध को नहीं भूल सकते, उस मेहरान को नहीं भूल सकते. तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया. एक और शख्सियत, मेहमान शख्सियत हमारे यहाँ मौजूद हैं, एमएल खटक साहब, जो कि एएनपी सिंध का ताल्लुक है. एमएल खटक साहब, आप आए और आके अपने ख्यालों का इजहार करें. आज जब मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मुझे एक और इस तरह की इवेंट याद आ गई जब खालिद सुमरो साहब ने साईं पे किताब लिखी थी और साफमा इस्लामाबाद में उसकी तकरीब रोनुमाई थी, और मैं उन खुशकिस्मतों में शामिल था जिसको भी किताब के हवाले से इज़हार राय की दावत दी गई थी. मुझे तो याद नहीं है उस किताब का नाम अभी, लेकिन जो बातें मैंने कही थी वहाँ पर उसकी मुख्तसर खुलासा 3 नुक्ते में बयान करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो इस मौके पे मुझे 2 साईं की शख्सियत जद्दोजहद को देखते हुए मुझे 2 शेर याद आ रहे हैं. एक तो पश्तो का है कि स्तादा खाइस कुलुनडीर दी जो लई में तंगा दुबकुम, मतलब यह है कि आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं, आपके हुस्न के इतने पहलू हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसको कैसे बयान करूं. और दूसरा शेर था उसका आरिफ साहब का, वो कहते हैं कि आशफ्त सरों ने वो कर्ज भी अदा कर दिए जो हम पे वाजिब है. तो मुझे भी पूरा शेर याद नहीं आ रहा है. तो ये शेर बिल्कुल उनकी शख्सियत पे फिट बैठता है कि उन्होंने, साईं ने जो जिंदगी गुजारी है, जो उसकी शख्सियत रही है, जो उनकी जद्दोजहद रही है, उन्होंने वो कर्जे भी अदा कर दिए थे जो उन पे वाजिब नहीं थे. मतलब उन्होंने इतना काम किया है न सिर्फ सिंध के हवाले से, क्योंकि अगर हम ऐसी शख्सियात को सिर्फ इलाकों तक महदूद रखें तो ये बड़ी ज्यादती होगी. साईं की जो शख्सियत है वो सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, उसकी जो तालीमात है, उसकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो जद्दोजहद है, वो तमाम रीजन के लिए, मैं कहता हूँ उसके लिए बात से रहमत थी. 3 एस्पेक्ट मैं बयान करना चाहता हूँ, डिस्टिंग्विश एस्पेक्ट. द फर्स्ट, देखिए उनकी कंटेम्प्रेरी जितनी भी शख्सियात रही हैं, सियासी शख्सियात रही हैं, वो उन्होंने बोला तो बहुत कुछ है, अच्छी अच्छी तकरीरें भी की है, लेकिन उनकी जो इंटेलेक्चुअल जो साउंडनेस थी या उनकी जो राइटिंग स्किल थी वो इतनी नहीं थी. साईं साहब ने 89 ईयर्स में तकरीबन 60 किताबें लिखी, और अगर उसे तकरीबन 30 साल का वो अरसा निकाले जो उन्होंने मुख्तलिफ कैदोबंद के दौरान गुजारे, तो ये बहुत बड़ी चीज है. कोई भी हमारी सियासी शख्सियत, उस पाए की सियासी शख्सियत ऐसी नहीं है जिन्होंने इतनी ज्यादा किताबें लिखी हो, और किन मौजूआत पे लिखी हो, हर किस्म के मौजूआत पे लिखी हो. दूसरी जो डिस्टिंक्शन जो मैं देखता हूँ उनकी शख्सियत में, वो ये है कि हमारे जो रोशन ख्याल या प्रोग्रेसिव जितने भी राइटर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने हमेशा मजहब की तरफ जो है ना एक मनफी रवैया रखा.
हालांकि मजहब मैं खुद मजहबी नहीं हूँ और एक अपना अकीदा होता है, लेकिन मजहब के दो पहलू हैं। एक उसका नेगेटिव पहलू है, एक उसका पॉजिटिव है। एक नेगेटिव फोर्स है मजहब का और एक पॉजिटिव फोर्स है। तो साईं ने क्या किया कि जो सिंध की सकाफत थी, जो उनका जो सोफियाना विरसा था, मिस्टिक जो हेरिटेज थी, उसको न सिर्फ उन्होंने अपनी सियासी बयानिया का हिस्सा बनाया बल्कि उसको रिडिफाइन किया। और जरूरत इस बात की क्योंकि पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में, कल के पाकिस्तान में, गुजरे हुए पाकिस्तान में दो हकीकतें हैं, एक मजहब और एक कौम परस्ती, नेशनलिज्म। अब इन दोनों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। तो साईं का कमाल यह था कि उसने जो अपना नेशनलिस्ट नैरेटिव था उसमें उसने जो पॉजिटिव फोर्स थी, जो सोफियाना जो वो था बयानिया था, उसको उन्होंने यकजा किया और अपने पैगाम को ज्यादा मुसर बनाया। तीसरी जो मैं देखता हूँ उनकी शख्सियत, अच्छा मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे पास आजन भाई को पता है, मेरे पास उनके आज के 2 कलमी नुस्खत हैं। तो हम जब आ रहे थे अफगानिस्तान से, तो आपको पता है कि जब आप यहाँ से कोई जा रहे हैं तो वो इंतहाई जरूरी सामान लेके जाते हैं अपने साथ। तो साईं ने वहां पर भिजवाए थे उनको छापने के लिए। तो कुछ किताबें तो छप गई थी वहां पर, और कुछ जो है ना जो छप गई थी वो कलमी नुस्खे मेरे साथ थे। तो हम जब काबुल से आ रहे थे तो हमने कीमती कालीन छोड़े, ऐसे कीमती कालीन छोड़े हैं, बहुत कीमती चीजें छोड़ी, लेकिन हम अपने साथ साईं की दोनों कलमी नुस्खे इसलिए ले आए कि वो अमानत थी। और जब एक दिन खालिद सुमरो साहब आए हमारे उस पे, तो मैंने उनको कहा कि सुमरो साहब, मुझे पता है कि आपका कितना साईं से ताल्लुक है, हमारे पास एक अमानत पड़ी हुई है तो मैं आपको देना चाहता हूँ। जब मैंने उसको कहा वो बहुत खुश हो गया, उसने कहा मुझे दे दो, ये क्या है। तो मैंने उनको, उसके बाद उनके साहबजादे भी आ गए GMSyed साहब के, उनको भी मैंने कहा कि इस तरह मैंने वो नुस्खे उनको दे दी। तो बातें तो बहुत हो सकती है उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी जो है ना जद्दोजहद के हवाले से, लेकिन मुझे जो है ना आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो ذاتی तौर पर मौका मिला है बहुत से जो है ना वो सिंधी रहनुमाओं के साथ, बहुत से बलोच रहनुमाओं के साथ, मुख्तलिफ कौमियतों के रहनुमाओं के साथ मिलने का मौका मिला, लेकिन मुझे हमेशा अफसोस रहेगा और अफसोस है कि मैं 2 शख्सियत से नहीं मिला। एक अब्दुल खान चौधरी साहब और दूसरे जो है ना वो साईं साहब। हालांकि बहुत ज्यादा उनके बारे में सुना है, उनकी फैमिली, उनके बच्चों के साथ भी आना जाना है, ताल्लुक रहता है, लेकिन उनसे मुझे कभी, तो मेरा ये जो है ना एक हमेशा एक जो है ना एक वो रहेगा कि मैंने उनके साथ क्यों मुलाकात नहीं। तो सिर्फ एक बात में आखिरी नोट पे कि देखें, अभी पिछले दिनों सिंध में बहुत ज्यादा पश्तूनों और सिंधियों के मसाइल आ गए। एक बात मैं यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये है कि जितने भी पश्तून हैं, सही है, कराची बेस कुछ लोगों को आप एक तरफ करें जो सियासत उनके लिए कारोबार है, जितने भी बेदार, एनलाइटेड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पश्तून एक्टिविस्ट हैं, वो समझते हैं कि सिंध धरती सिंधियों की है। हम उस पर कोई मलकियत नहीं जताते हैं, सही है। अब ये जो कुछ सिंध की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, पठान साहब ने भी जो ना, हमारे दोस्त हसन पठान, नहीं नासिर है, लेकिन हमारे दोस्त हसन, तो उनके साथ मैं कहता था कि आप जाली पठान। तो जो डेमोग्राफिक तब्दीली आई है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये जो तारीखी जबर है, ये आपकी दाखिली और खारिजा जो नाकेबंद अंदेश पॉलिसी उसका नतीजा है। अगर तरक्की का रफ्तार तमाम इलाकों में बराबर होता, अगर कुछ इलाकों को दानिस्ता नजरअंदाज नहीं किया जाता, या जो है ना वो दहशतगर्दी और जहादी बयानिया को आगे ले जाके तकरीबन 40-45 साल तक पश्तून बेल्ट में जो है ना वो जहादी कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बेल्ट न किया जाता, तो हमें क्या जरूरत थी कि हम जाते। तो लोग मजबूरन चले गए हैं। ये जितना सिंधी आज अभी पठान साहब कह रहे थे कि हम यतीम है या यतीम खाना की बात है, तो सिर्फ सिंधी ये नहीं समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान में यतीम है, सारी कौमियतें ये समझ रही हैं कि हम यतीम है, सारी कौमियतें समझ रही हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो ये रियासत है,
जो ऐसी उसने पॉलिसी अख्तियार की जिनकी वजह से डेमोग्राफिक तब्दीलियां आई, डेमोग्राफिक तब्दीलियां बलोचिस्तान में भी आई, हमारे पुख्तूनख्वा में भी आई, पेशावर शहर कभी जो है ना वो वहां पर दूसरा फर्द आपको इनको बोलता नजर आता था, आज आपको जो ना चौथा पंचवा फर्द जो ना इनको बोलते हुए नजर आ रहा। तो ये जो चेंजेस आ रही है, इसमें ये नहीं है कि पठान जो है ना किसी मनसूबाबंदी के साथ कराची गए या सिंध के बड़े शहरों में गए, लड़काना हैदराबाद गए, नहीं, वो एक प्रोसेस ऐसा रहा है, ना कि बंदे पॉलिसियां ऐसी थी और फिर तरक्की का जो नामवार प्रोसेस था, अनइवन डेवलपमेंट पैटर्न जो था, उसकी वजह से चले गए। तो सिर्फ मैं इसलिए इस पॉइंट को वाजे करना चाहता हूँ कि यहाँ माशाल्लाह काफी जो है ना हमारे सिंधी इंटेलेक्चुअल वर्कर एक्टिविस्ट मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम भी आपकी तरह मजमूम है। ठीक है कि कराची या सिंध के मखसूस पस मंजर में कुछ हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। साहब मेहरबानी, आपने अपने ख्यालों का इजहार किया। कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाएं। पुजाणी तरफ पाण प्रोग्राम के खणी हलूं। कुछ जेके असांजा दोस्त रहिजी वियल आहिनि उन्हनि खे जेको सो इनवाइट कजे ऐं कोशिश कयो जेतिरो घटि पाण ॻाल्हायूं त जीअं मानी बि तयारु आहे त मानी बि जेको आहे हर को आराम सां खाई सघे। हींअर ॿी असां वटि शख़्सियत मौजूदु आहे जेका तमामु उहा बि महिरबान शख़्सियत आहे। ज़फ़र बलूच साहब असां वटि नादिर बलूच साहब ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ कैनेडा जा साईं जो ताल्लुक है। सो नादिर बलूच साहब आप आए और हमारे साथ अपने ख्यालों का बात करें। नादिर बलूच साहब। Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for Saint Karudo and Sindhi World Congress for this beautiful anniversary for the Saint GMSyed. Today, I'm greatly honored to represent the Baluch community of Canada on the occasion of the 119th birthday anniversary of Saint GMSyed, the founder of modern Sindhi nationalism and the movement for the independent Sindhu Desh. Furthermore, I congratulate the Sindhi nation for remembering and following such a great leader with devotion and understanding. Saint GMSyed's personality and philosophy are deeply rooted in the culture of the Indus Valley civilization. The four aspects of his philosophy are Sindhi nationalism, Sufis, non-violence, and freedom. He remained dedicated to these ideals to his last breath. Today, every enlightened human must read his books on history, politics, and the true meaning of the Shah Latif poetry. However, I would not be wrong to say that to understand Sindh, one must understand Saint GMSyed. Yeah. The land of Sufis, Sindh is going through a period of great difficulties. Historically, we can compare the present situation of Sindh only with the time when Muhammad bin Qasim invaded the land, murdered, looted, and took away the daughter of the soil to give them to the imperial harems of the Arab sultans. Under the most corrupt Pakistan People's Party rule for decades, Sindh is being plundered by the Bahriyatan robber barons, and Hindu girls are abducted, forcefully converted to Islam, and married to criminals.
However, Islamabad is trying to sell the two strategically located island of Sindh to the Chinese government to gain control over the oil route in the Arabian Sea. The floods have caused the most extensive devastation in recent history. Thousands of people in small towns and villages died of starvation and illnesses under the west open skies. Pakistan rulers are using the images of the people miseries to beg from the World Bank and rich nations to fill their own pockets. The conditions in Balochistan are not different from the Sindh and Pakhtunkhwa. On both sides of the border, drawn by the British colonial rulers, Baloch people are suffering from the crimes against humanity committed by the Pakistani military and the Iranian terrorist IRCG. The brutal police attack on border protesters has left many men and women seriously injured and hospitalized. The trawler mafia is robbing all the fish from the sea, while the local fishermen helplessly watch their livelihood looted. Moreover, from January 2022 to December 2022, 367 Baloch went missing and 79 bodies of extrajudicially killed, forced, disappeared persons were identified in Balochistan. The Iranian regime and its terrorist IRCG have focused on and surrounded Western Balochistan cities and towns. Zahedan, the capital of Western Balochistan, has become the battlefield for the movement to change the regime. Iranian authorities believe that by defeating the Baloch and Kurds, they can regain power over the rest of Iran. To summarize the situation, the oppressed nations will have to double their efforts for the unity and struggle against state-sponsored terrorism, whether it is the military, the death squads, the IRCG, and FC, Rangers, or the Taliban. The state has colonized the nations and committed genocide of the people and their cultures. We must unite against all forms of terrorism and dictatorship. Long live free Sindh, long live free Pashtunistan, long live free Balochistan. Long live the unity of oppressed nations of the world. Thank you. Thank you so much, sir. हिकिड़ी ॿी शख़्सियत जेका असांजे दरमियान मौजूदु आहे ऐं पाण जेको आहे उहे प्रोग्रेसिव राइटर आहिनि पिताम्बर लोहाणो साहिब असां वटि मौजूदु आहे। अचो त पिताम्बर लोहाणो साहिब खे वेलकम कयूं ऐं संदन अचो साईं जन जे पंहिंजे बर्थडे जे हवाले सां या जेके असांजा ख़्याल आहिनि पेश कयूं पिताम्बर लोहाणो साहिब। हाँ, मैं जेल की दीवारों से अपना सर नहीं फोड़ सकता। हाँ, मैं जेल की दीवारों से अपना सर नहीं फोड़ सकता, लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं है कि मैं उसके आगे सजदा करूं। ये अल्फाज लिखे थे दोस्तोविस्की ने अपने नावल नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में। दोस्तोविस्की के ये अल्फाज जीएम सैयद की सियासत को काफी हद तक रिप्रेजेंट करते हैं।
दोस्तोवस्की का ये कोट मैंने इसीलिए लिया कि दोस्तोवस्की की जो फिलॉसफी है उसको अगर आप पढ़ें, उसके लिटरेचर को अगर आप पढ़ें तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सिंध की डायनामिक्स को समझने में और जीएम सैयद की पॉलिटिक्स को समझने में आपको बहुत मदद करेगी। उसमें दोनों पहलू है। मैं कभी जीएसएम का मेंबर नहीं रहा, ना मैं कभी जीएम सैयद का हिमायती रहा हूं। मैं मार्क्सिस्ट रहा हूं। मैंने चीजों को मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि हर चीज के पहलू होते हैं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें जो यहां कही गई हैं वो हिस्टोरिकली जीएम सैयद के हवाले से उन पे मेरे ख्याल से उन पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। बात यह है कि जैसे हाइडेगर ने कहा था, अपनी किताब में लिखा है, उसका जो मास्टरपीस है वजूद और वक्त, वो कहते हैं कि माजी गुजर गया और अपने साथ गुनाहों का एहसास छोड़ गया। हाल है ही नहीं, हाल सिर्फ मुस्तकबल की तैयारी है, और मुस्तकबल जो मायूसी है, नायकीनी है, बेगानगी है। तो जीएम सैयद का जो किरदार था वो गुजर गया, वो हमें साथ जो भी दे गया वो दे गया, उसमें कामयाबी है, नाकामयाबी है, लेकिन एक चीज जो अच्छी है वो ये है कि कम से कम उसकी फिलॉसफी, उसकी सोच जिंदा है। हम उसे एग्री करें या न करें, वो कम से कम इस हद तक कामयाब गया कि अपनी सोच को लोगों में इस तरह फैला के गया है कि आज लोग चाहें या न चाहें, इख्तिलाफ करें या न करें, वो जीएम सैयद को याद करते हैं। ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत सारे लीडर हैं जो आए दुनिया में, उन्हें बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वो अपनी लेगेसी नहीं छोड़ सके। लेकिन जीएम सैयद ने अपनी लेगेसी छोड़ी है, जो आजकल कैरी कर, ये आज हम यहाँ आए हैं, ये उसकी उस लेगेसी का हिस्सा है कि हम उसको आज भी यहाँ दूर दराज से आए जीएम सैयद को याद करने के लिए, उनकी बर्थडे मनाने के लिए। मैं समझता हूं कि जीएम सैयद की शख्सियत पे मैं बोलने के काबिल नहीं। मैंने ना कभी उनसे मिला, ना मैंने इतना उनको पढ़ा है। सच्ची बात यह है, उसका मुझे दुख है कि मुझे उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं उसकी शख्सियत पे बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं उसके दौर पे जरूर बोल सकता हूं। अगर हमें सिंध की मौजूदा सूरत-हाल को समझना है तो जीएम सैयद के दौर को समझना जरूरी है, और जीएम सैयद के दौर के बाद जो आज का दौर है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तो फिर हमारे लिए आगे के मसाइल का हल ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल है। और मैं समझता हूं कि उस मामले में जो कमी है कि हम बहुत ज्यादा शोला बयानी से काम लेते हैं, हम बहुत बड़ी तकरीरें करते हैं, बहुत बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन हिस्ट्री को और फिलॉसफी को पढ़ने के लिए हमें जो है वो इतना टाइम नहीं है, जो कि अफसोस की बात है। हमें उस पर जाना चाहिए ताकि हम सिम्टम्स को ना देखें। बुखार होता है किसी पेशेंट को, तो डॉक्टर का काम यह होता है कि बुखार क्यों हो रहा है, उसके अंदर बॉडी के अंदर कौन सा वायरस है जो उसको बुखार ला रहा है। सिर्फ बुखार को देख करके हम सोचते रहेंगे तो बुखार का हल नहीं निकाल सकते। उसके अंदर कुछ है, सोसाइटी के अंदर जो कुछ है उसको समझना जरूरी है, ना कि सरफेस पे जो चीजें हैं उनको देखें। हम सरफेस पे बहुत सारी चीजों को देखते हैं, उनकी डेप्थ में जाके एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम आने भी शॉर्ट था, मां खत्म तो गया, भूख लगी ऐसे ही। मैं थोड़ा यहां पर, किसी ने बात की तो चलो मेरे ख्याल से मैं अब इसको यही खत्म करता हूं। शाह साईं का एक शेर है जो कि हिक जुए बीजो है छड़ी की न जवान ओए भी इंसान जेके नंगन का नसब। ये जो शाह साईं जो शेर है, ये जो शाह साईं का शेर है, ये काफी हद तक जीएम सैयद की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। दो चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बायोलॉजिकल मदर, औरत, वुमेन जो कि हमें जन्म देती है, और दूसरी जो हमारी लैंड है, मदर है, जिसको मदरलैंड कहते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं
वो GM सैयद की सियासत का फंडामेंटल्स है, उनको अगर हम समझें तो काफी हद तक GM सैयद की सियासत को भी समझ सकते हैं। ये अल्फाज कह करके मैं यहाँ आप लोगों से वधीक कोन ॻाल्हाईंदासीं। दोस्तनि खे बुख बि लॻी आहे। बुख खां सभ खां पहिरीं जेका दाह कई उहा यूसुफ कई। त यूसुफ खे गुज़ारिश आहे कि तारीफ़ जो जेका मोहताज न यूसुफ अचे ऐं ॻाल्हाए। जेतिरो जल्दी जान छॾाईंदो ओतिरी जल्दी मानी मिलंदो। यूसुफ पहिरियों ॿुधायां ख़ुदा हाजन जी महिरबानी for inviting me over. I didn't prepare anything, he just asked me to say something. I think I'm nobody to say anything about GMSyed, but I can share my personal memory about him. I met him more than 3 decades ago, precisely around 32 years ago. And that was the time when Sindh National Alliance or Sindh Qawmi Ittihad lost an election against Pakistan People's Party in a big number, landslide. So I always, a fan of GMSyed. I read few books of him, and I always regard him the very good author compared to a politician. But anybody, can differ with my point of view. So I always wanted to meet him. So one of my cousins was very active in GSM movement. So I asked him that, whenever you planning to go to meet GMSyed, bring me along. I want to, meet him and see him. So sure enough, one day he came and then, he said, okay, get ready. So I still remember that in a room, GMSyed was kind of, laying on a bed, looking at the front, and there were so many young guys surrounding him. And everybody was asking different questions from him. Most of the people who were asking the questions were the same questions. Sain, why did we lost an election? Sain, ye kaum ke kadi akali di. असां लाइ sacrifice कयूं था, कौम पाण नथी उथणु चाहे, वॾेरनि जी ग़ुलाम रहणु चाहे थी. All the questions was along the same line, and rightly so, because the wave of nationalism in 80s was huge. Sindh National Alliance was not the electoral alliance. वो इलेक्शन से पहले ही हो गया था, फिर जवाहर साहब का जहाज गिर गया तो वो इलेक्शन में चले गए. लेकिन जो वेव थी वो huge थी. Almost every youngster was part of either federalistic parties or the nationalist parties. ये एक common वो था. तो जाहिर सी बात है इतनी लैंडस्लाइड से हारना, it was a big deal for them. तो GMSyed wasn't replying. फिर सवाल होता, फिर खामोशी हो जाती. GMSyed wasn't replying. He was just looking at the, and then with an exuberance, जिसम passionate कोई बंदा होता है, he said something which I don't want to repeat here, but उस एज में भी अपनी कौम के बारे में इतना पैशनेट होना, इतना दर्द रखना, एंड देन ही सेड समथिंग के जो बहुत बड़ी बात थी. दैट वाज अ शॉक फॉर मी कि इस उसमें भी, और उन्होंने सबके सवालात का करके फिर एक जामे जवाब दिया. तो बात यह है कि ना हम उनकी फिक्र से एग्री करें या डिसएग्री करें, जी पिताम्बर चाहे हो, पर उनका बयानिया अभी भी मौजूद है और वो उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक जो हमारे साहिल, हमारा वसाइल, हमारे रिसोर्सेज, हमारा हक़ हाकमियत अगर कबूल नहीं किया जाएगा तो वो बयानिया रेलिवेंट रहेगा, GMSyed रेलिवेंट रहेगा. और एक छोटी सी बात कर दूं, अभी रूही GMSyed के बारे में कुछ चाहिए थी तो मुझे भी जहन में एक शेर तरी आयो. बिछड़ के ज़ाते इश्क में हुए तन्हा, बिछड़ के ज़ाते इश्क में हुए तन्हा, गिरे तन्हा, उठे तन्हा, थके तन्हा, फिर चले तन्हा. साईं हिकिड़ी मां गुज़ारिश कंदुसि, तमामु ज़रूरी आहे. यूसुफ साईं बयाने जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो जेको असां वरी इमरान ख़ान सां घणो था जुड़ूं. साईं जी फिलासफ़ी बहितर बयाने वारो लफ़्ज़ नंढड़े माण्हुनि जे लाइ आहे. साईं फाइनल बाबा फाइनल प्रोग्राम के फाइनल जे तरफ़ हलूं था. हिकिड़ी ॿी शख़्सियत असां वटि जेका आहे उहा मौजूदु आहे. साईं जन पाण USA खां आया आहिनि. साईं तव्हांखे वेलकम कयूं था. पाण वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जा जेके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आहिनि. सो फरहान सूमरो असां वटि मौजूदु आहे. फरहान सूमरो साहब खे गुज़ारिश आहे त उहे
अचनि ऐं हिन सॼे प्रोग्राम खे कंक्लूड बि कनि ऐं गॾोगॾु जेको आहे हिन सॼे सेशन खे बि वाइंड अप कंदा हुन खां आख़िर में सिर्फ़ु हिकिड़ो थींदो किताब साईं जो साईं को ठीकु आहे महिरबानी थैंक यू सभिनी खां पहिरियों त अदा हजन अदी रुही जी महिरबानी जीअं भेटाई चयो आहे त मूं ॾिठा माउ जिन ॾिठो प्रीअ वाकई अदी रुही ऐं अदा हजन खे ॾिसी वाकई लॻंदो आहे त हिन क़िस्म जा माण्हू तमामु घटि आहिनि ज़िंदगीअ में ऐं मां सम्झंदो आहियां ऐं इहो शायदि मां पंहिंजी फैमिली जी तरफ़ां बि चवां थो त इट इज़ रियली अ ऑनर टू नो दैट इट्स वेरी फ्यू पीपल कम अक्रॉस हू आर सो जेन्युइन हू बिलीव इन दीज थिंग्स थैंक यू So, first thing first, I want to say this is not a 119th birthday, it is 120th birthday. Reason is, GMSyed believe in Chinese philosophy. Chinese believe when the children or kid born, he is already 1 year old. So if you have anyone who is doubt about it, his last birthday when he was alive in 1995, you go check the newspaper and get back to me, and you will find that I am right, and people who are saying 119, they are wrong. Okay, thank you. GMSyed, like there's so many things already being said. I'm not going to repeat many things here. We all believe people who likes him, dislike him, who agree him or disagree with him. We all agree on one thing, that he was a very important figure in modern history of Sindh. And people who are very important, they are also controversial also. If you read his biography, you will find him that he did a lot of different kind of politics. If you start from his career, he did a religious politics. Then he realized this is not good. Then he changed. Then he did Muslim League politics. He was a founder. He present 1940s resolution in Sindh Assembly. And interestingly, whenever his birthday comes, a lot of people selectively do this thing. They start presenting him as a founder of Pakistan and this thing. He already negated. So it's a disservice a lot of people do. And I know why they play these games. The reason is, I was discussing with Ada Hajan other day also, that GMSyed becomes such an important figure that nobody can deny his importance. So how you denied his philosophy. And when 17th January comes, you will see a lot of people say, he is the founder of Pakistan. He was founder of Pakistan, but he said it was his gravest mistake. And I'm suffering, and my nation is suffering because of this thing, because he believed in these things. So that's very important. So then he did Muslim League politics. Then he realized that, okay, this is not good. This is not going to achieve my objective. Then he changed, and obviously in 1970, he come up with the sovereignty and independence of Sindh. We were joking about saying Shah Sahib that he is a kingmaker. He was kingmaker in Muslim League. Now you imagine when in 1970 comes, when he started Sindh politics, he became alone. There were all these politicians, feudals, intellectuals, writers, journalists left him. Nobody was there. Go back and look at it. I remember and this is the one first-hand story somebody told. There's one of Sai's friend he was accusing young people that, oh, you guys don't know what you talk, this and that. He said, you know what, please don't talk to them like that. Because they are the only one who left with him in 1970. So in 1970, we were at crossroads. So because there was a person who came, I don't need to name that person. That person came, he said, you know what, I'll give you jobs. Come with me. And GMSyed came, he said, you know what, let's go and work for the ownership of Sindh. And unfortunately, at that moment, Sindhi nation selected jobs over ownership. There was a time we complained, IG of Sindh is not Sindhi. Chief Secretary is not Sindhi.
Interior Secretary is not Sindhi. Guess what? If you see IG of Sindh, Sindhi. Chief Secretary, I will consider him Sindh because he belongs to Hyderabad. All important posts are by Sindh. So where we are? Yes. Tell me, are we are better off in 1970 or we are worse off? You will find out. So that is where we have to go back about jobs over ownership. Unfortunately, we still talk about the same thing that okay, yeah, people need more jobs, people need to get out of country, come to United States or North America or Europe. Yeah, these things are fine, but this is not going to change the realities what we are suffering through. Let's look at the data. If you read the history, except third, you will never find famine. Asam sokedo mana Sindhu edo sukhyo satabo rahua. We always have food. You will never find food. People, our kids, like 4 million people are suffering of malnutrition. I never seen these kids except in Africa. I mean, this is where we are. I know we were discussing last night that okay, it's birthday, we need to be cheerful, but unfortunately, when you start talking about it, you just start trying to cry about these things. Means we have 10 million more people go in poverty because of this flood. Okay, right now we collected $10 billion. Everyone is jumping. Look at how great our People's Party and PDM did. They have collected $10 billion. It's a big deal. Next day, Das is saying 90% of them will be loans, which is basically 10% left. And who knows this 10% going to use where? So now you tell me, in this situation when people are dying for basic food, where wheat, which is basic staple or everyday, if it is not available, what you are expecting there? Either people will kill or they will kill themselves. Look at me, one guy, poor guy, because of this subsidized wheat, he got killed. He has 5 kids. So this is the unfortunate situation we are. So that's why GMSyed is right now more relevant than even before. Whether we can play games here, we can play around these things, but his teaching of secularism, of Sindhi as a culture, pluralistic culture, I'm going to talk about it a little bit later. I'm the finalist speaker. Remember, I have a unlimited time. So, unless you guys are hungry. So, this is where we are right now. Means he's more relevant now. You read his history. G.M. Dithoa, jaise maine dekha. If you read, at that moment, it was a big deal. Now we say, no, it's fine. Anybody who's educated here, if you read that book, it's a very light book. He never said he was not against Islam. He was not against any organized religion. He was for secularism. But at that moment, it's a big deal. It's just like same thing if you go back to Pakistan and say Qadianis are humans too, you say. People will come after your throat right now. So this was the kind of there he was. He doesn't care. He suffered immensely, and he always say people, I am suffering because of my mistake. People remind him, no, you did whatever you did, you are undoing it, stuff like that. But he always said that. He never, if I remember correctly, he never asked for any bail before arrest or these things. Never did it. Actually, interestingly, all these judges, they run away if he shows up. They don't want to prosecute him. He was such a big, he wants that, okay, give me opportunity, so I am going to talk about what I am doing and why I am doing. So anyway, I don't want to take him because it's very late, 2:15, I am hungry, you guys are hungry, we should eat soon. Whatever the Hajan reminds me that we have to say, whatever he said, it is written. If you remember, in the last at least years, he always, whatever he gave his speeches, it is written. So he doesn't believe in these things because he wants to document these things. So people, if you want to come after him, he doesn't care. So this is where unfortunately Sindh is. We have tons of jobs, but we don't have ownership.
and this is where we need to go. Job, few hundred job, few thousand job, few 100,000 job, not going to solve our problem. We cannot. Vice Chancellor of University cannot be appointed unless somebody approved it. You know who approved them. Yeah. This is a big deal. Means I am a graduate of Sindhu University. Alamo, Kazi, such a big figure who was Vice Chancellor. Who's Vice Chancellor now? So this is where unfortunately we are. So it is proved that job did not solve our problem. We have to go back to our struggle and take the ownership of it. That's very important for it. Yeah. And I know we always, the census about it, and yatim khano ya ye jeki gali thank. We are plural society. We believe in pluralism, and this people who are sitting is showing us. We are not conservative. We believe a pluralistic society. Baloch are here, Pathans are here. I think there are other people who Kashmir. Thank you, Kashmiris and other. This shows if we are conservative, you should not be here. We believe in you. We believe that as a nation you have right, but as a nation also we will have a right to process our demography, protect our demography. Why it is so sensitive? I can tell you universally, every Sindhi, People's Party, Muslim League, Badero, you name it, everyone is very sensitive about demography. Why? Just go back, look at the recent history. 1947, what happened? We lost 10 million Sindhis in a couple of years. All our writers, singers, businessmen, means all these people went away. Who we got? Tariq Islam. Now who we got? People who came in, who we got? How they are treating us? Somebody was telling me, a PTI moron gave a statement that we are Pakistanis, anybody coming from outside of Sindh, or they use this word, Androne Sindh. What is Androne Sindh? I don't understand. Yeah, interior Sindh. Have you ever heard interior Punjab, interior KP, interior Balochistan? These are the catchword. They use these figures to just discriminate Sindhis. They said, so this guy was saying, I am Pakistani, anybody coming out of interior Sindh is Muhajir. Now tell me, with these experiences, the way people who came in 1947, they treated Sindhis, do you think we should be reluctant of getting more refugees? Yes or no? वो हमें तमीज सिखाने आए थे, कहते हमें तमीज सिखाने आए थे, तुम तो हिंदुओं के गुलाम थे, इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं. दिल तो चाहता है उनको वापस भेज दो, बसीर साहब नहीं होते तो भेज देते उनको वापस. So that's the history of it. That's why we are so sensitive, because people, we accepted it. They never forget about they should give the love back. They start thinking that we are here to govern you. हम आपको तमीज सिखाने आए थे, लैंग्वेज सिखाने आए थे, वगैरह वगैरह. Just 5,000 old civilization को लैंग्वेज होता है, तमीज सिखाने आए थे. दुकान की दुकान खोली भाई ने. हाँ. So that's why we are very sensitive about demography. We are not against Afghans, we are not against Pashtun, Baloch, anybody. But as a nation, it is our right. So you need to be sensitive also. जब हमारे ही दोस्त हमारे खिलाफ लैंग्वेज यूज करते हैं, यार ये तुम तो वो असबियत पसंद हो, कंजर्वेटिव हो, कुंद जहन हो, xenophobic हो, how come you say आपको refugees नहीं पसंद? 2000 से मैं आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स. मैं क्या शक्ल उठा के पहुंच गया था? नहीं. जिसे कहते हैं लैंड ऑफ इमिग्रेंट. ट्रंप ने वॉल बनाई थी ना, बाइडन पहुंचा है, कहते हैं कि थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट. वो मेक्सिको प्रेसिडेंट कह रहा था कि यू डिडंट कंस्ट्रक्ट मोर वॉल. डिड ही डिसमेंटल दैट वॉल? ही शुड, बिकॉज़ लैंड ऑफ इमिग्रेंट. डेमोक्रेट्स बिलीव इन मोर इमिग्रेशन. तोड़े ना उसको, हिम्मत है उसके पास बाइडन की. उनका इवन द लैंड ऑफ इमिग्रेंट हैव अ कोटा. आई येट टू सी अ सिंगल स्टेटमेंट किसी भी ह्यूमन राइट्स की कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स में रेफ्यूजीज का कोई कोटा नहीं होना चाहिए. यहाँ तो
कैनेडियन इमिग्रेशन हो रही है ना, कनाडा को कहे ना कि अनलिमिटेड लोगों को एंटर करो. You all came through some process. Why? Not only demographic, but also you wanted people who come in. They need people, they need facilities, they need jobs. How do you control crime? I mean, look at Karachi, where it is. Nobody knows, nobody can govern. It is ungovernable because of mass exodus of people. That's why we are sensitive. हर किसी को हमने वेलकम किया. मैं अपनी फादर साइड से भी, my father side's people come from Punjab. But now I am Sindhi, like my friend said, he's Pathan. So there should be process to expect. अगर मैं अभी भी कहूँ यूनाइटेड स्टेट्स में 22 साल रहने के बाद, जब मैं ब्लू पासपोर्ट लेके घूम रहा हूँ, मैं किड्स बॉन्ड देयर, आई एम ओनली सिंधी, दैट्स अनफेयर. आई एम सिंधी अमेरिकन. I am involved in American politics. मेरी बीवी, I am proud for her कि she was first Sindhi girl who ran election and won. Because when you live in there, तो आप insert हो ना, आप accept करें locals को, आप उनको कहें कि यार thank you very much for accepting us, we are with you and we will work for Sindh. जब कोई भी बंदा बाहर से आता है, वो कहे कि भाई अब मैं सिंधी हूँ, मैं, हाँ, आई एम प्राउड. सिंध में ये साईं ने कहा कि मैं पश्तो नहीं जानता, काफी पश्तो स्पीकिंग है हमारे पास सराइकी स्पीकिंग है, जो जीएसएम के मेंबर हैं. घर में सराइकी बोलते हैं, बाहर आके सिंधी बोलते हैं. वी डोंट हैव, मीन्स आई बिलीव, जैसे कहते हैं ना, लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड गेट अ न्यू सोल. सिंध ने हमेशा वेलकम किया, किसी को नहीं कहा कि यार आप ये नहीं बोलो, वो नहीं बोलो. सारी लैंग्वेज को हम लोग, और यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि एज ए नेशन हमें हक है कि हम डेमोग्राफी को करें. उसको यही है कि बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. जो भी लोग आए हैं, मीन ये जो अभी माइग्रेशन हुई थी, दिस विल बी आवर लास्ट कपल ऑफ पॉइंट एंड आई एम गोइंग डन बिकॉज वी हैव टू गो. आई नो आदि रोहित स्टैंडिंग हियर. जो फ्लड में लोग टेम्पररी आए, उनके खिलाफ आपने लैंग्वेज सुनी थी कराची के कुछ लोगों की. वो तो अपने वतन में आए थे. कभी सिंधी में अब जो सारा इतना कहते हैं कि हिस्टोरिकल फ्लड्स आया है, जिसमें तकरीबन 80 मिलियन पीपल वर गॉट डिस्प्लेस्ड. डिड दे वेंट टू लाहौर? मुल्तान ही चले जाते, करीब था. दादू से मुल्तान कितना आए? वो तो अपने वतन में आए. व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग कि ये आए हैं, क्राइम बढ़ गया है कराची में, ऑल दिस बीएस यू सी इट. These are the things make us angry and sad. So that's why I request all my friends who are here, when it comes to demographic, that's why we are sensitive. You need to understand, and I really appreciate कि अब स्टेटमेंट आ रही है कि भाई सिंधियों का शुक्र है, और हमें भी पता है कि कितना पख्तून या दूसरे भी जो भी कौमियत है, कितना उन्होंने सफर किया है. But did we make any decision to cause this suffering? बताइए, हमने कोई डिसीजन किया? हम अफगान वार में गए थे, हमने और जो भी गेम्स प्ले की है पाकिस्तान की स्टेट में, सिंधीज एज ए नेशन कभी उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया है? हमने तो कभी भी नहीं किया. सो दिस इज ऑल आई मीन. यू वेलकम. आई नो एज अ सिंधी वी हैव अ ग्रेट फूड. आई एम हंग्री. यू हैव लेट्स गो. थैंक यू. हिकिड़ो सर मूंखे इजाज़त ॾियो. तव्हां ॻाल्हि कई त साईं जीएम सैयद मिस्टेक पंहिंजी एक्सेप्ट कई, असांखे करणु खपे. उते मां इंडोर्स थो कयां त साईं जीएम सैयद खे पाकिस्तान जे क़याम खां पोइ 4-5 महीननि खां पोइ गिरफ़्तार कयो 1948 में, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रिजनर, पॉलिटिकल प्रिजनर ऑफ पाकिस्तान. First, thank you. Yes, till last breath. But he is the first president. We must endorse that. Yes. याद रखण खपे. गिफ्ट आहे तव्हांजे लाइ, जेका पश्तून काउंसिल जो सदर साईं सिराज साईं आहे, जेको पोर्ट्रेट आहे तव्हांखे पेश कंदो. साईं सिराज साईं अचो. फोटो
भक्तों ने फिर हमें आउट नंबर कर दिया ये तो मानेंगे जी, तो गया कराची गया थैंक यू महिरबानी मानी जो हाणे वारो पर आख़िर में साईं हाज़म करोड़ साहब सभिनी जो शुक्रियो अदा कंदो उन खां पोइ मानी तरफ़ पाण हलंदासीं साईं हाज़म बिस्मिल्लाह केक जो ठीक आहे हाँ ये हमला और बाप हमारे अपने केक का दिया थैंक यू हक मौजूद सिंध मौजूद साईं सदाई करी मथे सिंध सकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद मुझे ख्याल है कि साईं जी शख्सियत एडी वधी आहे जो उन ते ॻाल्हाइण केतिरियूं बि निशिस्तूं कजनि एॾो हमागीर शख्सियत आहे जो नॉट गोना finish. We have to continuous. ये दोस्तन जो relevance साईं जी केतिरी आहे मां हिकिड़ो नंढो तव्हांखे मिसाल ॾींदुसि I'll just give one example. I remember went to his birthday in 1986 in his son. Mostly he used to do one, I think except one he did in Karachi. All of his birthdays were always in Sindh. And I remember in those birthdays, Sai Bacha Khan was sometime, he was there also, he attended, Abdul Samad Chakzai attended, a lot of friends from Punjab and Balochistan, Bengal, everybody was there. In 1986 when I went up there, I couldn't of course meet him, but the people, if I remember right, were few thousand, not more than few thousand. And now in 2017, I went back and I was there. I went to his birthday in Sun to see them. And when I left from Karachi, and it was all like a caravan from when the move and come to Hyderabad, and then reaching there was so difficult. Anyhow, I went up there, and from the morning till evening, this was all over people. Two important things which we talk about the relevance of them, which I saw, which make me feel better and see how Sayyid left his legacy. Two things. One, 70% of the people I saw in 2017, they were born after Sayyid. They didn't see him even. They didn't meet him. So that's his philosophy carries on. And the other thing was on that day, in entire Pakistan, in one day, 10,000 books were sold, and those books were being sold on the ground. 10,000 books were sold in one day. So talking about signing, so the other part, I think simple to make it just quite simple. Sindh. Other day, some people, friends were saying that Muhammad bin Qasim and all those things. See, after 1200 years, GMSyed was the first man who told us that Muhammad bin Qasim is not your hero, Raja Dahar is your hero. And where he said, in a country which was made in the name of Islam and is being carried on in the name of Islam. And the other thing he did before him,
Sindhis were caste. He was Bhutto, he was Sheikh, he was Mehman, he was Khan. He said, no, Sindhi is a nation. And he built up the case and he said, Sindhi is a nation and freedom is their right and it can be achieved. Those are the three important things he said. And for all these three things, he wrote. His books are translated in Urdu, English. In 70s, he wrote a book, Sindhu Desh Show and Chala, and which is translated Why Sindhu Desh and Why. You read today. I was the other day reading it. He has unbelievably mentioned all the geography, economics, and the historical perspective why there should be a Sindhu Desh, and how this our economy, geography, everything is. So we can talk a lot, but food is getting cold. So we are, so we'll do the cake and then we'll eat. And I'm really, really grateful. I don't know. On behalf of my family, my wife, my kids, and World Sindhi Congress, who I represent as senior vice chairman. Thanks all of you to coming in this cold weather and all far away. Thank you very much. I really appreciate your presence. Thank you very much. Wow, wow. Okay, come from this side, please. नंढड़ी की बर्थडे की है कौन था हैप्पी All the food has been cooked by my